University. So my aim is to gain skill regarding about entrepreneurships and innovation, and I want to share my skill to my students so that uh, we all can have a goal towards these entrepreneurships and innovation. Thank you very much. Great, thank you, sir. Morning, sir. My name is Abhishek Pragasa. I'm from Assam Institute of Management, assistant professor there. We wish to open an incubation center in our college. And I wish to understand whether, depending on the company, whether it should be a proprietorship or a partnership or a LP, whatever it is, the kind of funding that we should take, we should tell the students. And whether it's debt or equity. Yesterday we had a good session where we got to know about some funding agencies here. So maybe we learn more on top of that. Thanks. Great. So I met Mr. Sanjeev Raj a few days back. He was with Assam Institute of Management. I think he is retired or he's retiring somewhere. He was about to retire, but then he has an extension. He has an extension. Yeah. So we took some common sessions at NEHSDC. So I got through, have an interaction with him. It's good to know that you are here. Thank you. College mein aap milenge. Yeah. Good morning, sir. My name is Debashish Ranjan Nath, and I am from Assam Engineering College, Mechanical Engineering Department. So my expectation from this session is that whenever an idea will come for our students, so the finance part is the main basic driving engine for everything. So we will know how to, how that financial planning can be done. So that is what I'm looking for. Great. Thank you so much. So thank you all for taking this pain. I'll just take this mic. Hello. Yeah. So I think this is better now. Thank you at least for taking the pain. I just wanted to understand that what really are our pain points here, because I want to deliver on the pain points instead of just talking about the general information on all those things. It's good to know that people here really are very curiostic and want to learn about the various nitty-gritties of it. Just a quick introduction. My name is Nishant Agarwal. I am a chartered accountant. I've been practicing in Guwahati. It's my hometown, born and brought up in Guwahati. I was outside of Guwahati for quite a number of years for my graduation, for my CA training, and a few years in my job. I was with institutions like KPMG, EY, PwC, Deloitte, except for PwC, yes. So out of the 4 Big Fours, I've worked in 3 of the Big Fours in different divisions, different locations. I worked in Gurgaon, I worked in Pune, I worked in Bangalore. Have had a good experience across audits, due diligence. So with a good, with bigger clients, and saw the working over there. And post that experience, I have again, moved to Guwahati, my hometown, where I think I saw an opportunity where the need for financial literacy and people like us were there because of the immense potential that we had. And true to my feelings or my expectations, by God's grace, I'm getting a lot of response, and people are liking what we are doing in this entire Northeast space, not just Guwahati. So this was just my quick introduction. I am also a certified financial planner. It's a financial planning course from the Financial Planning Standard Board, US. It's there in India. So it integrates insurance planning, tax planning, investment planning, estate planning, your retirement planning. So it's a console planning, which I thought would give me a synergy with my existing tax practices and my audit practices. So we'll just start. So what I have done is, so I have divided my discussion into 3 parts. The first part would focus exclusively on the pain points of a startup. Okay, what pain points the startups really or the founders face at the initial stages. Somebody said that people think that when they reach 25 crore or 20 crore, only then it is important to know the nitty-gritties and manage funds. But if I have to start with 1 lakh, I want to know what exactly my pain points would be. So the first part would any which ways cover that thing. Okay, every founder who starts with a business does not necessarily need 10 lakh, 20 lakh, 50 lakhs. Even I have seen people who just start with an idea without any funding. They start with, it is their business strategy or their smartness through which they can grow their business. So
it is not necessary that it has to be capital intensive. Obviously, some businesses are capital intensive. We'll discuss that also. The second part is, जब a founder moves from a startup phase to a more established phase, where they have any business is divided into various cycles. We are aware of it, right? At the initial stage, growth stage, stable stage, decline stage. Okay. Now, when we are at a very small stage, the growth phase is very high because we are starting from zero. But then after a certain level, due to demand supply, we enter a phase where the area where we wanted to reach, we have reached that numbers, but then the growth is slow. That is where management or planning comes into picture. Obviously, planning is required at day zero also, but it is a more rigorous kind of planning and tracking that is required when we are at the stable stage. Then there are few common topics like retirement planning and all those things which are common for both the stages, whether it is a startup founder, whether it is a owner of a established business activities. So with this, we'll take it forward. Now, what I feel is, a startup owner is a expert in his or her domain. Supposingly, I am a IT founder. I know the integrities of what product I am building or what services I am giving. I am a master of that. Okay. I don't need, third person coming me or teaching me. Obviously, there will be guidance, learning. But what I am more worried about is, if I am looking at the IT side, who is going to help me with the compliance part, the finance part, the accounting part, or the business management part? Because just knowing one side of the coin or the entire gamut is not going to help me. I need to know, or I need at least someone to help me out. So there are two options: either you hire a full-time consultant or a professional. Now, the problem which people face is, they are at the initial stages. They cannot afford, or they cannot pay a full-time professional a salary which they otherwise may need. So what do? They are in a dilemma. They have to understand the compliances. They have no idea what are taxes, what are financial planning, what is cash flow, what is financial tracking, KPI tracking. They don't know this, but it is very important, because unless and until you track something, how will you know you are progressing or not? Broad numbers mein revenue is increasing is not a sign that you are increasing, you are now doing better. But there are KPIs, there are metrics that you have to track to actually know where you are making money, where you are losing money, or where is the pain point. So people need this help. So thankfully these days, due to awareness, there are many people who are offering this virtual CFO services, wherein you don't have to hire anybody, a full-time professional. You can hire the services at a 1/10 cost, and they can manage everything from that side. So my only point over here is, a business or a startup founder should focus on his core business activities, that is his business development activities, because that is the bloodline of the business. You have to increase the business. Rest, all the things, the downside, compliance part, finance management, tax, all these things can be managed easily at 1/10 cost these days. So this is where we have to educate the founders that, boss, please focus on your business. Please focus on the business development activities. Rest, all these things can be managed at a very cheap cost. Okay. So the moment you say these lines to a founder, 50% of his tension just goes away. Thankfully, I have been blessed to interact with a lot of founders in this Northeast, jahan pe I found out this pain point, and the moment we discuss and give them the strategies, 50% of their pain point just goes away. That I was thinking exactly like this. Who or what product can I take in where they can help me out in this? But then what we have, and this is not just the idea, we have been doing it for few of our founders for the past 1 year, and we have saw tremendous growth. A person who tries to do everything by his own, initially the growth rate is not that high, but when he focuses only on his core business activities or development, the growth rate is very high. And when you are in this market with a cutthroat competition, growth plays a very big role to capturing the market. So it has to be a smart decision. Now,
the most common question is ki what with which company formation should we go? Should we go with a proprietorship firm? I think somebody also asked me this question. Yes, should we go with a proprietorship firm? Should we go with an LLP? Should we go with a private limited company, or should we go with a public, whatever it is, OPC? So has anyone heard or heard any founder or a investor saying that if it is a private limited company only, then we will give you the funding, or we'll invest in your company only if it is a private limited company? Has anyone seen getting funding in a proprietorship firm or an LLP? तो सर फंडिंग देखा ही नहीं क्या किसी ने? So companies, right? Private limited companies. LLP, yes. Okay. But sir, that is not there in LLP or a proprietorship firm, no? So then how will they give the funding? हाँ. So that is what I am asking. कि किसी ने, has anybody heard कि unless it is a private limited company, we are not going to give you funding, or first convert it into a private limited company or form a private limited company, only then? Ma'am, you have heard this? Okay. And okay. Okay. Anybody else? No? Ma'am, why do you think so? It's the case like that आपको private limit करना पड़ेगा, LLP करना पड़ेगा? Any wild guess? बट अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन का बात है मैम, तो फिर वो तो मैं नॉर्मल पार्टनरशिप को भी रजिस्टर करके यूज कर सकता हूँ. व्हाई ओनली एलएलपी? एक सपोजिंगली आई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद यू, वी हैव अ प्रॉपर पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है, प्रॉफिट्स आर डिफाइंड, आर इन्वेस्टमेंट्स आर डिफाइंड, जितना कैपिटल हम लोग लेके आ रहे हैं, एंड इट इज प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड विद अ रजिस्ट्रार, ठीक है, वो भी रजिस्टर्ड है मैम, उसमें क्यों नहीं फंडिंग मिलेगा मेरे को? I don't think so. That is the reason, because सिर्फ registration का बात है तो partnership also is registered. कहाँ पे? How much income they can do? सर ऐसे तो कोई मैंने कंडीशन, मतलब सीलिंग कैसे लगा सकता हूँ अपर लिमिट पे कि मैं इतना ही कमा सकता हूँ? No, not really. मतलब there is no, sir, for your general information, in any kind of company or any kind of formation, कोई हमारा अपर लिमिट नहीं लगा सकता इतना कमाए. अरे भाई मेरी कंपनी है, मैंने मेहनत करी, मैं 400 करोड़ कमाऊं, कौन है मेरे को बोलने वाला नहीं कमा सकता हूँ? हाँ, टैक्स देना पड़ेगा बस, कमाने मतलब there is no such thing. Equity shares, okay. So I'll tell you one thing. Even for LLP, there may be some government institutions who may give you grant, but if it is an investor who is giving you investment, it has to be a private limited company. It has to be a private company. I have seen cases where people started with LLP, and when the time came to get a funding, they were asked by the investors or some of the institutions to please convert it into a private limited company. Otherwise, they will not get the funding. Why is this the case? Any wild guess by anybody? भाई प्राइवेट लिमिटेड क्यों ही चाहिए आपको? अगर 10% स्टेक चाहिए मेरी कंपनी का, तो मैं एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड आपको पार्टनरशिप में भी दे दूंगा ना 10% स्टेक. Is it okay if I say one or two phase in Hindi? If anything you've not understood, any line you've understood, please say this. Because I don't want my time or your time to get wasted, even if it is a 1 minute time. Okay, so I want to make a full utilization of this time, your time and my time. Okay, both हम दोनों का time is very important. Any idea, any rough idea कि why they are saying कि भाई private limit होगा तो ही will give the funding, otherwise will not come? Sir, not possible. Anyone recently heard of Gensol engineering? तो सर वहां कैसे पॉसिबल हो गया?
Hmm. company, Hmm. you have to comply many things. But in case of sole proprietorship or LLP, there are no such, process or you need not identify or authentify yourself. But when you go for registration, so you need to comply many things. So in that way, there are to some extent, or the investors can convince themselves that yes, that identity or that organization has some credentials or credibility. So do you know while registering an LLP, you have to register with the MCA, that Ministry of Corporate Affairs. वहाँ भी रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ भी पार्टनर्स का डिन नंबर होता है, वहाँ भी फॉर्मेलिटीज होता है. ऑब्वियसली जहाँ पे LLP फॉर्मेलिटीज आर एट लेवल 10, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेलिटीज आर और लीगलिटीज आर लेवल 10. 8 and 10 इतना ही फर्क है, but then it is also authentic, but still they don't invest in LLPs. I'll tell you what is happening really is there is no problem in fractional, like somebody says that ki, because in equity they say that I want 10% of your company, and that is the reason why the fractionality is there in private limited company and not in partnership. But that is not true, because in partnership also you can take up 10% stake in my partnership and invest the money. I'll tell you the problem. Number one is shares, number of shares. A private limited company is divided into number of shares. You can own just one share also, you can take the equivalent number of shares wherever want to. In LLP, that is a bit difficult. Supposingly, then LLP is formed with a capital of 5 lakh rupees, and today I want to invest 3,333 rupees. कैसे करेंगे? कितना पॉइंट्स में उसको लेके जाएंगे? बट प्राइवेट लिमिटेड में इट्स पॉसिबल, आप 3,333 शेयर्स दे दो हमें, अगर आपका 5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल. अनदर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013. वहां पे सब कुछ डिफाइंड है. इट्स अ न्यू लॉ. The initial Companies Act was 1956. It got revised, got changed to Companies Act 2013. Again, there is a revision that is going on, and a new Companies Act is going to come very soon. Now, let us compare this case with why not proprietorship. Proprietorship is governed by civil procedures, CPC, Civil Procedure Code, and that is which year? Anybody? 1908, 1908. आदम जमाना का लॉ है वो. Abhi, if there is any dispute that comes up in a proprietorship firm or a partnership act, it has to go through the civil court. And civil mein we all know kitna time lagta hai. Our entire generation will come and go, but the cases will not be solved. Every investor who puts in the money, every investor who puts in a money, they have an opportunity cost of that fund. देर इज एन इंटरेस्ट एलिमेंट ऑफ दैट फंड. ऐसा नहीं है उनके पास मतलब खजाना पड़ा है और वो लगा देंगे. दे ऑल्सो समटाइम्स बोरो फंड फ्रॉम देयर investors. So you have to understand how the private equity or angel investing game works. It is not that कि वो profit कमा के वो सारा पैसा आया है. They have some partners जिन्होंने पैसा डाला है, एक fund बनाया है. That fund manager invests money in the startups. So every money that they invest has an opportunity cost. Every money that they invest has an interest cost. So they also have a cost of money. Supposing they've invested in your money and some dispute comes up, and it takes 15 years to resolve the dispute, and that happens in 10 of the startups that they have solved. They'll be finished. So in private limited company, the disputes are resolved by NCLT, National Company Law Tribunal, which is very fast and resolves matters at 1/10 of the time which a normal civil court takes. And hence, because that law is new, it has taken the pain points of the investors into consideration. They have defined certain dispute areas. If this dispute happens, it has to resolve in this manner. If those, so they have formulated that policies or the act basis the past disputes, basis the past judgments of various courts and the Supreme Court. So this is the reason why for these many reasons any investor looks into investing in a private limited company. Now another confusion that runs is when any founder approaches you, which form of company should we initially start with. So there is no blanket answer to it. You have to understand what are the requirements. If they are of that opinion that we want to raise funds in a near future, and only then because it is capital intensive, so we may not be able to put all the money in ourselves. So if they are planning to raise funds from private investors or any angel investors, please advise them to start with a private limited company on day 0. Okay, don't say we want to start with an LLP and then convert into private limited company when the funding comes in.
I'll tell you why. Now, supposingly the cost of incorporation of a private limited company is coming around 12 to 14,000. The cost of incorporating an LLP will also come around 10 to 12,000. So, जब 2,000 रुपए का ही फर्क पड़ रहा है, then why are you starting with an LLP and then converting into a private limited company? Again, the problem is converting an LLP into a private limited company. That will cost you somewhere around 35,000, and it will take you 2 months minimum because there are various formalities. You have to, give advertisement in the newspapers, take an NOC from all the creditors, bank से loan लिया तो it will complicate the process. So there is a hell lot of complexities in conversion of LLP into a private limited company. You go to a consultant, they वो बोलेंगे हाँ करा देंगे, क्यों नहीं कराएंगे ना, उनको तो धंधा मिल रहा है. The problem is the founder gets stuck, no? उनका तो 2 महीना खराब हो गया. So this is where the general awareness and smartness of at least the people like us should come into picture na. Ki if you are really planning to raise funds, then start with a private limited company in day zero. The best thing is, I don't know if you people are aware or not, how much capital is needed to start with a private limited company. Ye anybody, any idea? सर किसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट नहीं करवाया क्या अपने किसी फाउंडर्स या स्टार्टअप्स का? आप लोगों के किसी के भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ किसी फाउंडर का? नहीं हुआ. चलिए, एनी विच वेज, एनी वाइल्ड गेस, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? सॉरी, 10,000. ओके, एनी एल्स? 10 lakhs. ओके सर, मार ही दोगे क्या फाउंडर को? 2 lakhs. Any other? Sorry, 1 lakh. No, so no. So minimum पूछा था मैंने. Any which ways, I have registered startups with just 5,000 rupees of paid up capital. 2 partners आए, मतलब 2 directors आए, 50-50. एक ने 2,500 डाला, एक ने 2,500 डाला. 5-5 हजार में हमने चालू किया, 10 हजार में हमने चालू किया. द मिसकंसेप्शन इज, जैसे किसी ने बोला 1 लाख रुपया, किसी ने बोला 2 लाख रुपया. दिस इज द मिसकंसेप्शन विच पीपल हैव with regards to private limited company. People लोग डरते हैं यहाँ पे, अरे सर क्या बोल दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब बहुत खर्चा है. ऐसा नहीं है. आज के रेट में gone are those days when private limited company registration used to cost 20,000, 30,000. At today's time it can be, how much time do you generally think of, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने में कितना टाइम लगता है? सॉरी, 8 days. ओके, एनी अदर गेस? सर हमने शॉर्टेस्ट टाइम 6 दिन में बनाया है कंपनी को. एक कंपनी को हमें 1.5 महीना भी लग गया था, बट द शॉर्टेस्ट टाइम दैट वी टुक ऑफ फॉर्मिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाज 6 days. इट वाज द फास्टेस्ट दैट वी डिड, एंड उससे कम में तो हो ही नहीं सकता. तो पहले इट वाज कि भाई हो रहा है, चल रहा है, चलेगा. नो, द थिंग्स हैव चेंज्ड. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड एंड द टाइम. एमसी आल्सो टेक्स टाइम समटाइम्स. तो earlier, and thankfully, I don't know if you are aware of this or not, in the entire Northeast, the filing fees has been exempted by the central government, Ministry of Corporate Affairs, up to 15 lakh rupees of authorized share capital. Is anybody aware of it? तो दे आर सेइंग कि इफ यू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन नॉर्थ ईस्ट, हमारी जो फाइलिंग फी है या जो हमारी फी है अप टू 15 लाख रुपीज, इट इज नील. एंड दैट इज द रीजन व्हाई फॉर्मिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन नॉर्थ ईस्ट इज चीपर देन फॉर्मिंग इट इन दिल्ली, महाराष्ट्र, बिकॉज वहां पे स्टैम्प ड्यूटी एंड एवरीथिंग इज वेरी हाई. हाँ, 15 लाख के ऊपर आप यहाँ पे असम या नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हो, देन इट विल कॉस्ट यू मनी. बट अप टू 15 लाख, विच इज अ गुड अमाउंट. 15 लाख का ऑथराइज रखो, पेड अप आप 5,000, 10,000 स्टार्ट करो. इट इज अ गुड अमाउंट. 15 lakhs इज अ गुड अमाउंट जो हमें दिया गया है. तो people are not aware of this. मतलब if I take any MCA data and see कि how many companies are registered in Northeast, बहुत कम है. Either इतना exemption मिलने के बाद तो the Northeast में private limited company should be the highest, because it is so cheap in forming a private limited company here. But the sad part is we are not aware, और हमें बताया तो हमें बताया नहीं जाता है, या people उनको खुद ही नहीं पता है. Sorry to say this, but matlab, many people, many professionals, many consultants also don't know this, and it is not like कि obviously nothing on their part, but पता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा ना. मतलब if you don't know anything, how will you guide somebody? So sad part is I want Northeast to be the highest area where जहाँ पे private limited company form हो, but sadly that is not happening. Let's see in near future if it happens or not. The same cost of forming a company in Delhi or Maharashtra is very high, but in Northeast it's very cheap. But still people are not, they're scared to do.
फाइलिंग फी ऑफ एमसीए। जैसे अगर आप अप टू 15 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल रखते हो तो गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी से 525 रुपीस लेती है। समझ लो, मतलब दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जेम्पशन एंड सब्सिडीज टू नॉर्थ ईस्ट फाउंडर्स। तो if the government is promoting that people from northeast should come and do great business, then I think it's our job now to spread this awareness and get it started. So I think this was a right platform for me, जहाँ पे I get to meet wonderful faculties like you, जो आप लोग अपने founders या जो incubatees होंगे उनको please आप guide कीजिएगा कि ऐसा नहीं है, लोग डराते हैं। इवन इवन इट इज नॉट द प्रॉब्लम। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि फाउंडर्स को नहीं पता या उनको नहीं पता, जो फाउंडर्स जिस कंसल्टेंट से कंसल्ट कर रहे हैं उस कंसल्टेंट को ही नहीं पता, तो उसमें फाउंडर्स की क्या गलती है? फाउंडर इज एन एक्सपर्ट इन हिज डोमेन, जैसे मैंने बताया आपको, उसको आईटी का सब नॉलेज है, आप बीट नहीं कर पाओगे। लेकिन दीज थिंग्स ही इज नॉट एन एक्सपर्ट एंड ही इज नॉट सपोज टू बी एन एक्सपर्ट, ट्रूली स्पीकिंग। तो finding the right people also is a challenge. Finding the right co-founder is a challenge, which you may have also faced, which we are also facing from the every founder who comes up, that he's finding for a right co-founder. It's a big dilemma because ये एक issue है जो हमें over a time solve हो पाता है. There is nothing any which ways. How many have heard of OPC? नहीं. सो इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे सर ने बताया, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, बट समबडी सेज दैट कि भाई मुझे किसी को 1 शेयर भी नहीं देना, 1% भी नहीं देना, सो दे कैन फॉर्म एन ओपीसी, 1% कंपनी। बट एनी विच वेज आई एम सेइंग दिस कि इफ यू आर इन द फेज ऑफ रेजिंग फंड्स और लॉन्ग टर्म में ना, एनी विच वेज दिस ओपीसी हैज टू बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगेन वो कन्वर्जन आएगा। इससे अच्छा इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एन ओपीसी, यू प्लीज सजेस्ट योर इनक्यूबेटर्स टू स्टार्ट विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या होगा, अपने मम्मी को, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, या जिसको भी विच इज अबव 18 ईयर्स, 1 शेयर या 1% शेयर देंगे, 99% वो रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू कैन स्टार्ट विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, a public limited company, although this is public limited company is not relevant at our stage because we are dealing with startups, but any idea of public limited company, क्यों होता है public limited company, difference between private limited company and public limited company? Sir, sorry? In company. So count founder and co-founder, it's like 2 people are the founder of a, so one, it is co-founder, मतलब आपने भी स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया, 2 people, and then they are said as co-founder, and founder is just 1 people. If co-founders मतलब 2 or more people are founding that startup. So public limited is basically for large entities जहाँ पे उनको IPO अगर वगैरह में जाना है, या फिर पब्लिक से फंड उठाना है, इट कैन बी डिवेंचर्स, और अगर IPO में जाना है तो सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स इन दी सेकेंडरी मार्केट। एनी विच वेज दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस। किसी ने IPO में कहीं कुछ कंपनी का हेल्प किया है? कहीं नहीं, छोड़ने, विल नॉट गेट इनटू इट। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, बिजनेस लोन। हाँ प्लीज। Oh, sorry, I missed out. हाँ। आप माइक लेंगे क्या सर? हाँ। So, have you heard of social security stock exchange? तो earlier this concept did not were not there. अभी क्या हो रहा है? Even a NGO or a Section 8 company can register or get themselves listed in a social stock exchange. ठीक है, there is a process of it. Instead of just relying on private funds or private companies for CSR funds, आप पब्लिक में भी जा सकते हो, अपना जो NGO या Section 8 कंपनी को वहाँ लिस्ट करा सकते हो। वहाँ से आप, जैसे एक तरीके से IPO हो गया, आपका IPO एक सोशल सेगमेंट में रहेगा एंड वहां से आपको फंडिंग मिलेगा। हैविंग सेड दैट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस,
और आप जो फंड्स का कह रहे हो, देर इज नो वन स्टॉपिंग यू, मतलब देर इज नो हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रेजिंग फंड्स अपार्ट फ्रॉम CSR इज टैक्स exempt any which ways, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम CSR फंड्स देर आर मेनी कंपनीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, in fact in northeast only, where they are putting in or helping NGOs and section 8 companies in innovation, investing in startups. In fact, earlier they used to only do it through section 8 companies or NGOs, but now they have also launched their own incubation programs and their own incubation centers. So वो थोड़ा funding जो पहले आपके through जाता था वो खुद भी करने लगे हैं. But still I am aware of many NGOs or societies, they are raising good amount of money from CSR funds or these innovation funds. So there is no clause as such or stopping which is stopping you from raising funds, even if it is section. Yes, obviously if it is a non profit then आपका objective profit नहीं होना चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप कल कुछ बिजनेस करना चालू कर दिए, उससे प्रॉफिट पैसा बनाना चालू कर दिया, अगर बनाना चालू किया तो फिर टैक्स लगेगा उसमें. द एडवांटेज ऑफ सेक्शन 8 इज आपको जो डोनेशन का 80G और 12AA का एडवांटेज मिलता है. That is an advantage that we have, and that is the reason this income tax ने हमें exemption दिया. So अगर आपका objective सही है and if that is happening, then there is no one stopping you. तो loan part. Has any founder approached you कि sir I want to apply for a loan but I'm not getting it, or what is the process, what are the various loans that I may be eligible to, what are the various schemes जहाँ पे I may be eligible for a loan or something like that? Any dilemma that you may have faced with any of the startup founders? किसी का भी नहीं? कभी कोई आया ही नहीं कि सर मुझे फंड मतलब लोन में दिक्कत आ रहा है फॉर माय बिजनेस और माय स्टार्टअप? यहाँ पे हमारे जो फैकल्टी है, हमने कितने स्टार्टअप्स को अभी तक इंक्यूबेट कर लिया है? नहीं, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं. अच्छा, तभी मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टार्टअप ही नहीं आया हो कि लोन नहीं मिल रहा. मेरे पास तो मेरे हर दूसरे दिन फोन आता है मेरे क्लाइंट्स का कि सर लोन नहीं हो रहा है, लोन नहीं हो रहा है, लोन नहीं हो रहा है. Any which ways, this is a favorite topic of the startup founders, business loan, because business loan is like bloodline for their business. Initially तो हमारे पास कमी होते हैं ना पैसे, मतलब, और जब बिजनेस भी ग्रो करते हैं तो भी कमी तो होती है पैसों की. So business loan is, see, if you ask me honestly, which is cheaper, debt or equity? मतलब इन्वेस्टर से पैसा उठाओ या फिर डेट? कोई आंसर? एनीबडी वांट्स टू टेक अ वाइल्ड गेस? डेट इज चीपर. एक्सीलेंट. क्यों सर? Normally, we used to borrow money from outsiders, and we used to borrow with the arrangement that we have to return that with a fixed interest. In case of equity, when we need to return, we have to return based on the profit we earn, and the equity shareholders have a say over that profit. That we need this amount of dividend. So that's that's not that, because we already comes in an agreement that we have to pay in a fixed return. सर ये जो आपने बताया ना, ये बहुत स्टार्टअप फाउंडर्स को समझ ही नहीं आता है. उनको लगता है कि डेट में तो सर मेरे को इतना देना पड़ेगा 8%, इक्विटी में तो मेरे को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो वो लेगा. बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वो अपना पार्ट ऑफ कंपनी ना दे रहे हैं इन्वेस्टर को. See, if it were to me, if I was a smart founder, अगर मेरे को पता है मेरे प्रोडक्ट में दम है, मैं कभी भी प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा नहीं उठाऊंगा. It is my personal call. It may not be the case with everybody. Why I'm saying this? If I am confident in my product and if I can say that I can scale it easily and the bank is ready to finance me at a secured loan of let's say 9%, unsecured of चलो 12-13%, तो भी I am more comfortable in taking it and repaying it and again growing it rather than giving an entire part to somebody else जो सिर्फ पैसा देगा, कुछ नहीं करेगा, and जब my business scales, exit ले लेगा at a good handsome amount. This may be my case. As I said, it is a personal call, but if you are smart enough to compare the cost of debt and the cost of equity, cost of debt is any which way, any day cheaper than the cost of equity. हाँ, that may be a case जहाँ पे आपका objective of raising fund is to buy a Lamborghini or good house. आपको वो सब करना है तो फिर obviously आप पैसा उठाइए, पैसा चलाइए इन्वेस्टर का. बिजनेस का अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो it will any which ways be achieved. Now coming to business loan, there are various types of business loan. Okay, one is किसी ने होम लोन का सुना है? होम लोन में कैसा होता है?
होम लोन में EMI देना होता है, हर मंथ देना पड़ता है, करेक्ट? तो कोई ऐसा लोन है जहां पे हर मंथ नहीं देना पड़ता है? जितना मैंने विड्रॉ किया या जितना मैं यूज कर रहा हूं बस उसी पे इंटरेस्ट देना है मेरे को, EMI नहीं देना है. Overdraft, exactly. CC. This is a favorite product of all the startup founders. CC. CC can be secured, can be unsecured. अगर आपका बिजनेस में टर्नओवर है, there is business, तो पूरा unsecured होता है. Has anybody heard of CGT SME scheme? No. CGT SME scheme is a wonderful scheme of the central government, which says that they will guarantee 75% to 80% of the loan of the founder or the business, and the rest 20 to 25% is guaranteed by the banks. किसी ने CGT SME के बारे में नहीं सुना? It's a favorite product of the founders. So इसमें क्या होता है कि CGT SME, C for Calcutta, G for Guwahati, T for Tamil Nadu, S for Singapore, M for Maharashtra, E for England. तो इसमें क्या होता है? CGT SME, ओके. इनफैक्ट इसका एक मॉडिफाइड वर्जन असम गवर्नमेंट का भी है जहां पे वो 100% ऑफ द लोन गारंटी कर देते हैं. ऑब्वियसली दिस CGT SME comes with a guarantee fee, but that is also very subsidized in the northeast. तो CGT SME में क्या कहता है? गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप बिजनेस करो, बिजनेस में मतलब जेन्युइन बिजनेस, योर टर्नओवर. नाउ अगेन I ask you that if you are a central government or a government and I come to you for a loan and you say कि भाई टर्नओवर कितना है, I say कि 10 लाख है, you say कि 10 लाख कैसे है, show it to me. तो what documents should I be supposed to show you? आपने पूछा मेरा टर्नओवर 10 कितना है, मैंने बोला 10 लाख रुपए है, आपने बोला दिखाओ कैसे है 10 लाख रुपए. तो how am I supposed to show? Any guess? Invoices? सर वो तो मैं फेक भी बना के दे सकता हूँ. मैम इतना टाइम ही नहीं है ना मेरे पास, 100 क्लाइंट बैठे हैं, मैं एक एक ट्रांजैक्शन को टिक टिक करके थोड़ी देखूंगा कि ये क्रेडिट हुआ है, ये मेरा बैंक सेल का पैसा है या किसका पैसा है. सॉरी, sorry, tax filing. Yes, tax filing is one of the, but tax filing happens in the month of June, July. I want a loan in the month of, let's say, August, September, जो लास्ट ईयर का है. बट मैम लास्ट ईयर तो मेरा कम था, इस साल मेरा अच्छा हो रहा है. वो बोलता है लास्ट ईयर के हिसाब से तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेगा, मेरे को चाहिए 5 लाख रुपया, मेरा इस साल बहुत अच्छा हुआ है. मैं ये जाके बोलता हूँ बैंक को, मेरा इस साल बहुत अच्छा हुआ है, लास्ट ईयर तो मेरा नहीं है, 1 लाख रुपए मिलता है मेरे को, कैसे होगा? What is the proof of my turnover? Profit and loss. Ma'am, if I am a proprietorship firm, there is no audit required if I have a turnover up to 2 crore rupees, right? There is no law as such. जहाँ पे आपका turnover, if it is below 2 lakh rupees, 2 crore rupees, I have to go do an audit. If it is not an audit, then what is the proof of my turnover? Audit is a proof of my turnover कि audit हुआ है, सर ये certified है. In a private limited company 2 crore का लिमिट नहीं है, वो तो चाहे आपने 10 लाख रुपए भी किया हो तो आपको CA सर्टिफाई करना पड़ता है. बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑल्सो, उनका ऑडिट ऑल्सो हैपेंस आफ्टर मार्च. नो, इफ आई वांट अ लोन इन द मंथ ऑफ सितंबर, देन व्हाट इज द प्रूफ? सर द प्रॉब्लम इन current account is I have more than 2000 transactions in my bank, ठीक है, up to September. The bank manager will never, एक एक टिक करके वो कैलकुलेटर लेके नहीं बैठेगा कि कितना आपका टर्नओवर हो रहा है बैंक में. क्रेडिट, एवरी क्रेडिट इज नॉट अ सेल, नो. इट कैन बी सम लोन ऑल्सो, इट कैन बी सम, एक ट्रांजेक्शन रिवर्स भी होके आया तो उसको भी आप सेल तो नहीं ले सकते. सर बट बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड, नो, फॉर एवरी बिजनेस. Every business balance sheet is not required, but loan is required for everyone. What is the solution? नहीं, I'll tell you. How many of you are well averse of GST? हाँ है. तो GST लॉ क्या बोलता है? GST में रजिस्ट्रेशन कब लेना है? ठीक है, करेक्ट. सो इफ यू आर इनटू सर्विसेज, then as soon as your turnover is reaching or about to reach 20 lakh rupees, you are compulsorily required to take GST registration. If you are trading in goods, then you are compulsorily required to take GST
as soon as your turnover is about to reach 40 lakh rupees. However, there are many instances जहाँ पे compulsory registration is required. Will not get into GST का nitty-gritties. Now, supposingly, if my turnover is above 20 lakh or 40 lakh, then so I have to definitely mandatorily take GST registration. So if my turnover is between 40, 20, 40 या 2 crore, तब तो GST will give a proof of my sales because GST return लगा रहे हैं, तो GST return लगा रहे हैं तो सेल डिक्लेयर करना पड़ेगा month on month. करेक्ट. तो जीएसटी इज अ प्रूफ ऑफ माई टर्नओवर. नाउ अब अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख और 40 लाख से भी नीचे है, तब क्या करूं मैं? नो आइडिया. हाउ मेनी हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म मुद्रा लोन? मुद्रा लोन, मुद्रा लोन का सुना है सर आपने? What is it? Any idea? Wild guess. मुद्रा मतलब मैं बता देता हूं, छोटा छोटा. Now take a guess. No. So earlier the limit of mudra loan was 10 lakh rupees. Now in the recent budget it has been increased to 20 lakh rupees. Mudra loan says that हमें इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेना. आप अगर छोटा बिजनेस हो तो अप टू 10 लाख रुपीस हम बहुत ज्यादा सवाल जवाब आपसे नहीं करेंगे. हमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आईटीआर वाईटीआर जो थोड़ा बहुत है आप दे दो, उसके बेसिस पे हम लिमिट लगाएंगे और एक आपको सैंक्शन करके अमाउंट दे देंगे सीसी का. नाउ व्हेन दे सैंक्शन यू द सीसी, नाउ दे हैव योर अकाउंट इन देयर हैंड. Now whatever money comes into your bank account, they can analyze it. They don't have to do it one on one. Their system does it. वो आपका सिस्टम है उनका टर्नओवर एनालाइज करके निकाल देता है कि आपका क्या होना. तो अगर आपका बिजनेस एनी विच वेज 20 लाख और 40 लाख से नीचे है तो इट इज एट अ वेरी स्लो लोअर लेवल ना. तो आपको मुद्रा इज सफिशिएंट फॉर यू. यू डोंट हैव टू गो फॉर सीजीटी एसएमई और एनी अदर स्कीम. द मोमेंट योर टर्नओवर क्रॉसेस 20 lakhs और 40 lakhs एज द केस में बी, तब आपको जीएसटी लेना है. तो जीएसटी सेल्स इज अगेन अ प्रूफ ऑफ योर turnover. Now, is CGTMSE saying only that turnover is relevant? No, they are saying turnover के basis पे limit will be decided, but the drawing power will be decided based on inventory, debtors and creditors. What is the difference between limit and drawing power? कोई idea? नहीं, I'll tell you. Limit is this is the highest limit up to which you can withdraw the money. Drawing power is इस limit में भी sometimes your business may not be at a दिस लेवल. नो, कभी आपका स्टॉक कम बेसी भी होता है तो उस बेसिस पे हाउ मच मनी यू कैन विथड्रॉ फ्रॉम दैट लिमिट इज डिसाइडेड. दैट इज ड्रॉइंग पावर और ड्रॉइंग लिमिट एंड द सैंक्शन लिमिट इज डिफरेंट. नाउ व्हाट इज द रेशियो दैट इज जनरली सीन? 20 to 25% of sales, 70, 75 or 80, 75 to 80% of inventory, 60% of debtors, net of creditors. ये लिमिट है सीजीटी एसएमई का. मतलब अगर मेरा डेटर्स 100 रुपीज है, इन्वेंट्री भी 100 रुपीज है, तो 75 रुपीज ऑफ इन्वेंट्री एंड 60 रुपीज ऑफ डेटर, अप टू 135 रुपीज मैं लोन ले सकता हूं. इंटरेस्ट मतलब विदाउट एनी कोलेटरल. ऑब्वियसली कोलेटरल दोगे तो वो लिमिट बढ़ जाएगा, बट फाउंडर्स प्रेफर अनसिक्योर्ड एंड कोलेटरल फ्री लोन बिकॉज दे डोंट वांट टू गो इन द कॉम्प्लिकेशंस कि दे ऑफर समथिंग एज अ कोलेटरल. सो अगर कोलेटरल फ्री आपको अनसिक्योर्ड लोन चाहिए देन दिस इज द लिमिट. 25% to 20% of sales, 80% or 75% of inventory and 60% of your debtors. ये आपको unsecured loan बैंक is very much comfortable in giving you. The most advantage, देखो अभी इसमें क्या है ना, अगर कोई बनिया बुद्धि लगाता है वो क्या करता है कि 12% में supposingly he gets a loan of 10 lakh rupees. ठीक है. Now somebody may not earn. Now you may question me कि supposingly if the bank is charging me 12% and the margin of my product is only 10%, then I am making a loss in taking a business loan. No, I am purchasing in FMCG. Everybody is aware the margin is only 4%, 3%, 5% like that. So why are they still looking for loan? They are incurring losses. No, any answer for that? I am getting a loan for this CGT SME or unsecured loan for 12%, and my margin in my trading of goods is only, let's say, 10% for the simplicity of understanding. Then how is it possible that everybody is still fighting for loan and everybody is wanting for loan? ये loan तो चाहिए मेरे को. Any idea, ma'am? Ma'am, it is not true. मतलब every business does not have this higher margin. Sorry?
बहुत टाइम, एग्जैक्टली सर, वेरी करेक्ट सर, वेरी करेक्ट. अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन. आपने 10 लाख रुपए लिए, वो 10 लाख को आपने 10% में बेचा, ठीक है. उसको बेच के आप पैसा रिकवर करते हो, एंड इफ योर साइकिल इज फॉर 1 मंथ, 1 मंथ इज अ गुड साइकिल, तो आपने पूरा पैसा उस मंथ में 1 मंथ में निकाल लिया. तो इमेजिन वो आप कितनी बार कर सकते हो. अगर एक महीने में पूरा पैसा रिकवर कर लेते हो खरीद के, 12 बार कर सकते हो साल में. तो 12 × 10 कितना होता है? 120%. बैंक को कितना देना है? 12%. बैंक के पैसे से आपने 108% का प्रॉफिट कर लिया, अपने पैसे से नहीं, सिर्फ बैंक के पैसे से. दिस इज वेयर मैजिक ऑफ रोटेशन कम्स इनटू पिक्चर. किसी को नहीं समझ में आया तो आई एक्सप्लेन अगेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेट करना है अपने स्टार्टअप फाउंडर्स को. नहीं समझ में आया मैम. मैंने 10 लाख रुपीज का इन्वेंट्री खरीदा, बैंक ने मेरे को लोन दिया, मैंने 10 लाख रुपीज का आई परचेज द इन्वेंट्री. आई सोल्ड दैट इन्वेंट्री एट 10%. ओके, आई रिकवर्ड दैट मनी. दिस एंटायर थिंग टुक 1 month. Now I have recovered the money. I can again purchase the inventory, no, and again I'll sell it. Again I'll recover the amount. That will again take another 1 month. So like this, I can do how much time? 12 times in a year. And every time, how much am I earning? 10%. So 12 into 10, how much is it? 120% I am earning money. And the bank is charging me 12% per annum. No, it is not every month. It is per annum. So how much am I paying the bank? 12%. How much am I earning from that money? 120%. So what is the margin? 120 minus 12, 108. So with that bank's money, I am earning 108%. Are you getting my point? This is the magic. Every business in India, if they have grown to such heights, it is not possible that they have done it with their own funds. There is a limit to own funds. It has to be financed through bank. Are you getting my point? So this is the advantage of bank loan, specifically CC. किसी को भी डाउट है, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, बट प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो. सर, आई विल एक्सप्लेन वन मोर. Sir, you are saying 1 month is too hypothetical, and in practical that does not happen. That is what you are saying. Sir, that is, I have taken a conservative approach. I have seen people, वो अपने पास लाते ही नहीं है, वो ऑर्डर परचेस करते हैं, सीधा बायर के पास जाता है, पैसा आ जाता है, एक हफ्ते में रोटेशन होता है. सर, सर, not securities market, sir. It is proper goods. Yes. Yes, you take examples of FMCG goods, okay? FMCG goods like chips or biscuits or atta, there is always a demand for it. Okay. Now, I have seen cases, example, ITC cigarettes. Okay. ITC cigarette is a case where there is enough demand and not enough supply. So what the owner is saying me कि सर आप मुझे जितना पैसा दिला सकते हो ना उतना दिला दो, मैं पहले एडवांस में पैसा उठा के, जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, मैं पहले पैसा उठा के उसको सप्लाई कर देता हूं. सो ही ऑर्डर्स द गुड्स फ्रॉम कोलकाता, ही स्टेज इन डिगबॉय एग्जांपल. टू रीच फ्रॉम कोलकाता टू डिगबॉय, द ट्रक टेक्स 3 days. Okay, it has reached. Obviously you have to pay the company in advance to get the goods. Okay, 3 days mein the truck reaches him. Within the next 2 days he sells all his cigarettes. He gets the money there and there itself. Sir, I took 1 month, no? This guy is circulating the money in 5 days. आप छुट्टी उट्टी भी काट लो, कितने बार सर्कुलेट किया होगा इसने. He started the business with 1 crore. Within the next 5 years, his turnover is above 30 crores. If managed properly, business loan is a boon for us. If managed properly, I have seen cases where people have taken the loan, but they have spent it on their lifestyle, and now they're struggling to pay it back. They're just increasing the loan amount to, pay off their existing liabilities. That is a debt trap.
If not managed properly, see, this loan is a double-edged sword. If managed properly, it will take you to good heights. If not managed properly, it will just finish you, sir. Honestly, I have seen many people just struggling with their day-to-day expenses. Now, what happens is, once you are addicted to this loan and you are not managing properly, you want this loan from anywhere. Now, the banks charge normal interest rate, but there is a limit to which the bank will fund you money. If you're not growing your business, they will not give you additional money. So what they do in desperation, they approach NBFCs like Bajaj Finance and all those people. What they do is they take advantage of your situation and start charging you 36%, 38%. Now imagine if they are charging you 38% and you're not able to manage your money, that is again a dead trap. You will never be able to come out of it. And once you default, they will just play with your CIBIL score. And this is again a loop. Your CIBIL score goes down, no bank will give you money. So this is a loop. So please, while this loan is a very good thing, it can do wonders for your business. But if not managed properly, it will just destroy you. So please advise your founders or incubators to be very much disciplined whenever they are looking for business loan. Now, there can be a scenario when this happened with one of my clients. What he did was, we got him a CC based on his business requirement. Instead of purchasing the inventory, what he did was he purchased a truck with that CC, a goods carrying truck. Do you think he did the right thing or he did the wrong thing? Anybody? Supposingly, ma'am, I have a business. I took a CC of 30 lakh rupees cash credit. Now, instead of using it in my business and purchasing the inventory and rotating it, what I did it, out of this 30 lakhs, 20 lakhs I purchased a truck, a good supplying truck from that CC. Did I do the right thing or did I do a wrong thing? Okay, sir. I'll come to your point again later. Okay. Anybody else? No? Just use your common sense. Ekdam common sense hai. Did he do the right thing or a wrong thing? I'll give you a hint. मैंने उसको बहुत झाड़ा, बहुत डांटा, सुना सुना के उसको एकदम रुलाई दिया ऑलमोस्ट. रॉन्ग थिंग तो ठीक है, बट क्यों? वो तो मैंने बोल दिया, मैंने उसको डाटा तो मतलब रॉन्ग है, बट क्यों? नहीं, बट वो तो बिजनेस में यूज करेगा ना सर, उसने खरीदा तो बिजनेस के लिए था. नहीं, I'll tell you why. Now, CC और unsecured loan comes at an interest rate of 12 to 13%. Unsecured है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा. किसी ने यहाँ पे व्हीकल लोन लिया है? लिया है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है उसका? तो क्या स्मार्टनेस हुआ? 12% को आप रोटेट कर सकते थे. और व्हीकल लोन में तो दे डोंट सी द टर्नओवर. नो, CC, getting a CC is difficult because it is unsecured and it is dependent on the business turnover, debtors and numbers. Getting it is difficult. Vehicle loan तो every bank is ready to finance you because it is against a vehicle. आपको ट्रक ही खरीदना था तो 30 लाख के ऊपर का आपको vehicle loan मिल जाता. 30 lakhs तो आपका CC था ही, उसके ऊपर में you would have got a vehicle loan. So what is the stupidity that you did? कि आपने वो 20 लाख तो वही, अब नाउ इमेजिन वो 20 लाख का रोटेशन होने वाला था ना सर, उसका जो प्रॉफिट्स आना था दैट विल गो अवे. आप तो 10 लाख कोई ना रोटेट करोगे बिकॉज 20 lakhs you need any which ways purchase the truck. So please educate your founders or your incubators like that also कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उसी में यूज करे. If the purpose is something different then please discuss it. सर हाँ बोलिए सर. सर एक बार थोड़ा रिपीट कीजिए. मैंने 10 लाख का लोन लिया. सर बट देन यू हैव टेकन दिस 10 लाख रुपीज टू डू बिजनेस. नो सर, तो आप ये 10 lakhs को पूरा यूटिलाइज कीजिए ना सर. व्हाई आर यू डूइंग इंश्योरेंस? सी सर, इंश्योरेंस एनी विच वेज विल बी अ क्लॉज.
नहीं नहीं नहीं, I'll tell you what. आप जब सीसी लेते हो ना सर, whenever you take a सीसी, तो कंपनी, the bank will demand an insurance against your stock. वो तो प्री रिक्विजिट है, बट उसका प्रीमियम इज ओनली स्मॉल अमाउंट. व्हाई आर यू स्पेंडिंग 6 लाख रुपीज ऑन इंश्योरेंस? आपका तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है ना सर, ये अगेंस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट योर क्रॉप और योर इन्वेंट्री, जो भी अपना गोडाउन में माल पड़ा है, इट इज अगेंस्ट दैट. द प्रीमियम इज नेवर 6 lakh rupees. Why will the premium be 6 lakh rupees? You are talking about an insurance premium of 6 lakh rupees. तो मतलब कितना का माल इंश्योर्ड हुआ होगा? In crores. So the smartness is getting a CC only for a business, and if you are purchasing it, see, in business, where is the money actually getting stuck? If we have done business, we will understand that the money is getting stuck either is in our inventory. हमने माल खरीद लिया, we have purchased the inventory, it is not getting sold. So my money is stuck in my inventory. हमने इन्वेंट्री परचेज किया, वी सोल्ड इट ऑल्सो, बट वी डिड नॉट गेट द मनी बैक. सो द आर मनी इज अगेन स्टक इन द कस्टमर्स. दीज टू आर द मेजर वर्किंग कैपिटल फंड्स दैट आर बी ब्लॉक. तो बैंक इज रेडी टू फाइनेंस यू अगेंस्ट बोथ दिस आइटम्स. सो वी शुड टेक एन एडवांटेज ऑफ इट. हम कहते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री 4 करोड़ का पड़ा है, 2 करोड़ का हमारा कस्टमर है, आप हमारा पैसा 6 करोड़ रुपए अटका हुआ है, आप हमें फाइनेंस दे दो, वी विल फाइनेंस यू सीसी अगेंस्ट इट. प्रॉब्लम कब आता है? जब हमारे पास इन्वेंट्री 1 लाख रुपए का है, डेटर कुछ है नहीं, और हम 2 लाख रुपए का लोन देखने जाते हैं. तब बैंक की सेइंग, भाई किस बेसिस पे हम आपको लोन दे, आपको क्यों चाहिए लोन, वेयर इज योर मनी गेटिंग स्टक? तो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर वर्किंग कैपिटल. अदर फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर अदर ऑप्शंस, लाइक एज आई सेड, आई गिव यू एन एग्जांपल. व्हीकल लोन के लिए अलग से देयर इज अ लोन, इवन इफ इट इज फॉर बिजनेस. आई मे परचेज अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माई गुड्स. नाउ सर, आपका जो फ्रैक्शनल वाला आया ना, कि इफ आई एम टेकिंग इट ऑन हायर इट इज चार्जिंग मी मोर, वर्सेस मैं खुद खरीद लेता, बोलिए, कैश क्रेडिट, इट इज लाइक ओवरड्राफ्ट. नाउ अच्छा, अनदर एडवांटेज ऑफ सीसी इज, supposingly I took 10 lakh rupees and I used only 2 lakh rupees. I made a payment of 2 lakh rupees. Rest 8 lakh is there still in my account. So the bank will charge you interest only for the 2 lakh rupees that you have used. Vis-a-vis a term loan like a home loan. Home loan में तो आपने पूरा 24 लाख रुपए अगर पे कर दिया, तो पूरा 24 lakh rupees पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है. So there is an advantage in CC like that also, that the amount that you are using, सिर्फ उसी पे they charge you the interest. Okay? सर बोलिए. हाँ, तो फ्रैक्शनल में सर एनालिसिस इज डन इन दैट वे. लेट्स से दैट अगर मैं रेंट पे लेता हूं तो इट इज कॉस्टिंग मी मोर, विज अ विज इफ आई परचेज इट इट विल कॉस्ट मी लेस. तो सर दैट इज अ गुड बाय और रेंट ऑप्शन, बट देन after you have decided that you are going to buy it, okay, then there you have to evaluate the option which is the best buying decision. It is not CC, it is your vehicle loan. If you have enough funds, then no worry, आप क्या अच्छा पैसा आप खरीद लीजिए ना, बट अगर नहीं है तो get it financed through a vehicle loan. Cool sir. So utilization of the loan for the purpose that they have taken it for, that should be intact. Any which ways, this is again violation of the bank norms. बैंक के norms में, agreement में भी लिखा होता है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, कि अगर आपने working capital के लिए लिया है तो आप इसको working capital में use कीजिए. Don't use it in purchasing or making any fixed asset. आपने ले लिया, बैंक को पता नहीं चला, that does not mean कि बैंक may not penalize you. If they find it out, they can penalize you easily. Any which ways बैंक penalize करे नहीं करे, but that is a bad business decision that you took. Okay. This was unsecured loan. Now coming to term loan. Supposingly you want to set up, किसी ने प्रोजेक्ट फाइनेंस का नाम सुना है? DPR, प्रोजेक्ट फाइनेंस, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, नाम सुना है? तो whenever we have a plan, or any businessman, makes a plan of setting up an industry. It may be manufacturing with some machines, with a land, or it may be some, starting a hostel with a building and all those things. It comes under project finance, where you are applying the loan for getting a project finance. The rate of interest in project finance or term loan is very low because it is backed against an asset. See, you have to understand the point of view of the bank. अगर unsecured है तो very common sense कि the rate of interest will be higher. If it is secured against something, then the rate of interest will be lower. It is very much understood. Common sense. ठीक है? Since this project finance or project loan is backed against assets like building, land, and hence the rate of interest is very lower. How? Example, I am running a school. Now, the student capacity
is 400 and it's full, मतलब पूरा full हो गया है. There is no way I can in मतलब और students को I can induct in my existing school. But I see a huge demand from more students in my city, or I want to expand it to a different city. So I have identified a land and I want to make a building and start a hostel or a school over there also. So for me, applying for a CC will be a foolish decision, because that is not a CC, that is a term loan or a project finance. Jahan pe that is a project that I have and I want to apply for a loan. Banks easily finance up to 75% of the project. 25% you have to finance from your own pocket, which is very much okay. मतलब अगर आप 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ तो अपने पॉकेट से भी फाइनेंस कर सकते हैं. 75% banks are ready to finance and the interest rate is also lower. The only thing is, in project finance, the interest is charged like EMI. It is not like CC. But the rate of interest is very low. So project finance is another option that is available to us. So why there is a distinction that you have to understand is because you have to understand the requirement of your founders कि why they are requiring the loan. उनको क्यों चाहिए लोन? अगर if they are requiring the loan to set up a machinery plant, तो फिर हम इस कैटेगरी में जाएंगे. If they are only looking loan for their working capital requirement, तो हम CC में जाएंगे. So there are different categories which is important to understand, and hence this distinction. Loan against machinery, which is very much common sense. Ki if supposingly I am a doctor, I have my clinic and I want to purchase a doctor's ka any, supposingly I have a aesthetic clinic or a skin clinic. The machines are very costly these days. Or in any lab also, if I want to purchase a machinery, the machines are very costly. So instead of financing out of my own pocket, I finance it through bank. Banks can easily finance 75 to 80% of machinery. So if I am a doctor or any other person who is wanting the money just for machinery, so we apply under this category, that is loan against machinery. The rate of interest over here is also very low because it is backed by machinery. So this is another category, that is loan against machinery. The rate of interest over here is also in single digits and it's very low because again the interest charged over here is just like EMI, monthly interest, not a CC one. Now there has been a lot of changes in this category, where earlier what used to happen is कि you had applied for buying a machinery for let's say 1 crore, 75% was financed by bank, that is 75 lakh rupees. किसी ने क्या किया, 1 crore का जो कॉस्ट वो कोटेशन है वो ज्यादा दे दिया. एक्चुअल में मशीन आना था सिर्फ 80 लाख रुपीस का, कोटेशन बैंक को सबमिट किया 1 crore का, बैंक ने 75 फाइनेंस किया and the actual machinery costed only 80 lakh rupees. So आपने क्या किया, बैंक का 75 lakh rupees लेके वेंडर को दे दिया, अपना सिर्फ 5 लाख रुपया लगाया. तो to curb these cases, now what the bank is doing, they are these days paying the vendor directly. Okay, so bank is smarter than us nowadays. The general rule for buying any loan against machinery is you get 3 quotations from different vendors. ठीक है, मशीनरी का कोटेशन लाओ, वो मशीनरी का 75% फाइनेंस पहले वेंडर को करेंगे, आपको नहीं करेंगे, एंड आपको भी अकॉर्डिंगली अपना 25% ट्रांसफर करना. दिस इज लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, पर्सनल लोन कैटेगरी कि भाई यू हैव अ बिल्डिंग एंड ऑल एंड यू वांट टू टेक अ लोन अगेंस्ट दैट, तो वो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी होता है. इसको LAP कहते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो आप वो पर्सनल नेचर का भी हो सकता है, उसका आप यूज बिजनेस में भी करिए. द बैंक हैज नो प्रॉब्लम बिकॉज इट इज बैक्ड बाय सिक्योरिटी. एनी व्हिच वेज, लोन में कोई कंफ्यूजन, कोई भी एक क्वेश्चन, कुछ भी एक जो आप लोगों ने जनरली डिलेमा फेस किया हो? अभी तो एनीवेज वी आर स्टार्टिंग अप, बट I think as and when people come to you for these kind of queries, then maybe you'll get to know more about it. Mudra, yes. So Mudra loan is given, Mudra is just a name for a loan. It is available with all the banks. Supposingly you want to apply for Mudra loan, you can approach any bank or a branch of your bank and say that I want to apply for Mudra loan for my business, and then they will accordingly take the proposal forward. So Mudra is a name given for small loan amounts. Earlier the limit was up to 10 lakh. Now they have raised the limit to 20 lakh rupees. Okay, so up to 20 lakh rupees of loan, which is under Mudra loan. Mudra also has 3 different categories. Tarun, something like that. I'm forgetting the names. So वो अलग-अलग category है. But Mudra loan में they don't ask for too many documentation, and obviously they'll ask for some documentation because again it is unsecured, so they need some comfort. But this compared to CGT SME, this is a simpler loan to get.
because the guarantee fee is less. Supposingly, good question. तो CGTSME is a central government scheme. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि बेस्ड ऑन टर्नओवर या जो जो पैरामीटर्स है आप लोन दे दो, 75% हम फाइनेंस कर देंगे. इन नॉर्थ ईस्ट दैट 75% इज 80%. ओके, in outside northeast the guarantee fee that CGTSME is with a guarantee fee. If the central government is saying that I am guaranteeing a loan, so they charge 1.5% of the loan as guarantee fee plus 0.5% as processing fee something. In northeast that processing fees is waived off, 0.5 to ऐसे ही चला गया, and that 1.5% is also half to 0.75%. So these are the advantage that people in northeast have rather than other than the northeast area. एंड इफ यू आर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड नॉर्थ ईस्ट तो कुछ और कंसेशन है, शायद 0.2 का और है गारंटी फी का कंसेशन, सो वो भी एक एडवांटेज है हमें. एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस लोन पार्ट? Sir, see, it depends on the demand of your product. Example, if I know there is demand for the product and I'm able to sell it, then sir, I will not close it, no, because every rotation of money is giving me additional profit. But you see that you are not no more interested in this so-called business. The demand is not high, the inventory is just lying around, and you are just paying the interest without anything. Then it is advisable to close the loan, sir, because again there is a clause in CC that if you prepay the loan, there is prepayment charges of 1% or 2%. Obviously you can negotiate this while sanctioning, but if there is a prepayment charges and the business is going good, so sir, why will you pay 2% additional money, na? Machinery, if you have the money, you have accumulated the money, and if the prepayment clause is not there, you can pay off the money earlier. It is good only. But sir, if I as a business person, if I use my smartness into picture, and if I say that okay, machinery loan, I got this for 8%, okay, I have spare money, I will invest it somewhere else and get 12% easily. So why will I pay off that loan? तो मैं उसी मनी से 12 minus 7.5 around 4.5 ऐसी कमा रहा हूं, तो सर why will I pay off? It depends on personal choice. But अगर मेरे को ऑप्शन दिया होता, I would have never repaid it in advance, because with that money I am getting additional 4.5. कहीं भी इन्वेस्ट कर देता, मैं आज मार्केट में इन्वेस्ट कर देता सर अपने स्पेयर मनी को, तो भी मैं 12% रिटर्न निकाल लेता आराम से. अपने बिजनेस में यूज कर लेता तो ही मैं उसको रिटर्न रोटेट करके निकाल लेता. तो आई वुड हैव नॉट रीपेड, बट अगेन इट इज अ पर्सनल चॉइस सर, you may repay it. Because for everybody, for somebody, something जब तक लोन रहता है तो they have a tension kind of a thing, and if they have spare money, they may think I just don't want to take this tension anymore, I just want to pay it off and be tension free. So you may accordingly take a decision. And if you are not sure of your financial discipline also, I don't know if I'll be able to be disciplined with my money when it is a bank finance, I'm not so sure, you can pay off. It's better to pay off rather than be indisciplined with your money. So accordingly, it's a personal choice. Any other doubt? Venture capital comes under this category of No, sir. Venture capital is equity. Okay, so what is the difference between angel investor, private equity, venture capitalist, or strategic investor? कोई distinction? कोई anybody? Angel investor क्या होता है? Private equity क्या होता है? Venture capitalist क्या होता है? Okay. Venture capitalist is it's a fund. इसका काम ही है, their main business model is to invest in others. Private equity amount. Okay. To some extent, you're correct. So angel investor, as he said, it's friends, family, individual. आप भी angel investor, आप किसी startup में पैसा लगाओ तो individual name पे 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए, you are an angel investor. Angel investor is like that. The difference between venture capitalist and private equity is the stage of investment. So venture capitalists generally invest at a very early stage. It may be pre-seed, it may be seed. Okay. सर दैट इज नॉट ट्रू. अब सर एक बात बताइए, अभी बिजनेस ही नहीं कर रहा है, सीड लेवल पे है, तो रिस्की तो है ही ना. स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग इज एनी विच वे रिस्की. आज मैं एचयूएल में कंपनी एचयूएल का स्टॉक में पैसा लगाऊं वर्सेस एक स्टार्टअप में लगाऊं, तो रिस्क लेवल इज डिफरेंट. नो सर, इन अ स्टार्टअप द रिस्क इज मोर, रिवॉर्ड इज मोर. एचयूएल में रिस्क इज लेस, रिवॉर्ड इज लेस. एचयूएल इज हिंदुस्तान यूनिलीवर का लिस्टेड स्टॉक. ओके. this one is defined by ICICI Bank, because in India ICICI happened to be the first bank to introduce venture capital. Okay. Where they are going to finance
got risks in their hand, and they will be with the company till the risk is at the minimum level. Once the risk goes out from the minimum level, then they will withdraw their equity. It's a kind of definition we got at one point of time. Sir, that is also true. What I said is कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, जब बिजनेस मॉडल फुल प्रूफ नहीं है, मार्केट का जो आपका पेनिट्रेशन है दैट इज नॉट फुल्ली प्रूवन. सो जब ये सब प्रूव नहीं है, इट इज बट इम्प्लाइड कि इट इज एट रिस्की इन्वेस्टमेंट. नो, आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन. आपने मार्केट प्रूव नहीं किया, आपने अपना प्रोडक्ट को प्रूव नहीं किया, बट मैंने इन्वेस्टमेंट किया. इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट. नो सर. सो यू आर ऑल्सो करेक्ट, बट आई एम ऑल्सो करेक्ट कि वेंचर कैपिटलिस्ट तो अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करता है. जब वो ग्रोथ स्टेज में आ जाता है, जब सब कुछ प्रूव हो जाता है, व्हेन दे आर एट द ग्रोथ स्टेज, देन द प्राइवेट इक्विटी कम्स इनटू पिक्चर. जब मैंने कुछ प्रूव कर दिया, व्हेन आई सी देयर इज अ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, व्हेन आई सी सम विजिबिलिटी, देन प्राइवेट इक्विटी कम्स इनटू पिक्चर. ओके, इसके बाद का भी एक स्टेज है, प्राइवेट इक्विटी एग्जिट करके आइदर दे सेल इट टू द एग्जिस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर. सपोजिंगली मैं एक एफएमसीजी सेक्टर में आई हैव अ स्टार्टअप विद अ डिसरप्टिव आइडिया, और मैंने क्या किया, सीड लेवल पे वेंचर कैपिटलिस्ट से इन्वेस्टमेंट उठाया, मार्केट को प्रूव किया, प्राइवेट इक्विटी ने पैसा डाला, वेंचर कैपिटल को एग्जिट दिया. प्राइवेट इक्विटी एग्जिट करके हो सकता है एचयूएल को बेच दे, बिकॉज एचयूएल इज अ लीडर इन द एफएमसीजी सेक्टर. तो हो सकता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एचयूएल सीज द कंपनी और माय स्टार्टअप एज अ थ्रेट, तो दे कैन बाय माय business at some valuation. Or there may be a case where the private equity says that I have enough confidence in you, I will not let my investment go to a strategic buyer, हम direct IPO में जाएंगे. तो private equity takes you to the IPO route also. Depends on the private equity, which private equity it is. So sir, this is the difference between venture capitalist, private equity and angel investor. ठीक है? Any other doubt? नो? कोई इन्वेस्टमेंट स्टेज को लेके, कोई बिजनेस लोन को स्टेज, कोई बिजनेस लोन के बारे में कोई भी डाउट रैंडम नहीं है? विल मूव फॉरवर्ड. See, this kind of projects generally is not required for startups, but it is required once you reach a certain level. What is this project? It stays supply chain and cost optimization. हमने कोई यहाँ पे ये कंसल्टिंग फर्म्स का नाम सुना है? बेन, मैकेंजी, बीसीजी. We have heard these big threes? No? किसने किसने सुना है? सर आपने सुना है? What are these firms? What do they do? Any idea, sir? Okay, yes, you're right. Any other thing जो आपको लगता है वो लोग करते हो? मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म्स हैं वो लोग, क्या कर सकते होंगे? तो some of the projects that they do is cost optimization projects, very much required at a certain stage, not required for startups, but it is required at a certain level. जब आपकी कंपनी एक लेवल पे पहुंच जाती है, when they reach at a certain level, you hire these consultants, or you hire consultants जहां पे you analyze where you are incurring or bleeding the money. They analyze if supposingly cost structure को भी study करते हैं. They study your organization structure. They study that how many employees are there in your organization, whether that much employees is actually required. आपने सुना होगा कि आज इस कंपनी ने इतना अपना एम्प्लॉइज को मैनेजर लेवल पे फायर कर दिया, इतना अपना 20% वर्कफोर्स को कम कर दिया. ये जो कम किया, क्या उनका बिजनेस कम हुआ क्या उसके बाद? बल्कि बढ़ गया ना, प्रॉफिट भी बढ़ गया. तो ये कैसे हो गया यार कि मतलब 20% वर्कफोर्स को फायर कर दिया, फिर भी बिजनेस और प्रॉफिट्स बढ़ गया? See, we are not discussing the ethics side and the impact on the human. ये सब नहीं डिस्कस कर रहे अभी. I am just discussing the business founder और business owner का side. Okay? Now, ये कैसे हुआ कि you have fired 20%, 30% of your workforce, 10% of your workforce, and still you are able to scale your business and maximize your profits. Obviously, ethically, not unethically.
So this is where cost reduction projects come into picture. Why do you think Indigo is the only profitable airline in this country? बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? मैम एयर इंडिया में भी फ्लाई कीजिए, इकोनॉमी ही है वो, कौन सा आपको प्रीमियम फील देते हैं? गो एयर बंद हो गया, किंगफिशर बंद हो गया, डेक्कन एयरवेज बंद हो गया, इंडिया में तो हिस्ट्री है बंद होने का. एंड द सेम केस इज ग्लोबली, इट इज नॉट जस्ट इंडिया, इज समथिंग डिफरेंट. सो देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज जहां पे अगर आप कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज नहीं लगाएंगे ना, इट विल गो रिडंडेंट. इंडिगो डिड एग्जैक्टली दैट. उन्होंने टू द टी दे डिड दिस कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज, एवरीथिंग. मतलब आगे अगर मैं आपको उनकी स्ट्रेटजीज बताने जाऊंगा तो आई नीड जस्ट वन डे टू गो थ्रू द क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजीज लगाए अपने बिजनेस को रिफॉर्म करने के लिए. बट एज आई सेड कि दिस स्ट्रेटजीज, व्हाई एम आई सेइंग दिस, इट मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर यू इमीडिएटली, बट it may be relevant for you in the future when one of your incubators or your startup scales up to a level where they may need it. Okay, so you should be aware कि ऐसे भी projects होते हैं जहां पे we analyze the cost structure, the human resource structure. In fact, आप जो products buy कर रहे हो, supposingly I am a company buying a certain product at let's say 100 rupees from a vendor and the payment terms is 10 days within the invoice. Okay, अगर आप समझोगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो ऐसी भी स्ट्रेटेजीज होती है जहां पे आई नेगोशिएट द सेम 100 रुपीज, आप 100 रुपए में दीजिए, बट आई विल पे यू इन 30 डेज टू अ डिफरेंट वेंडर. उससे क्या इंपैक्ट आएगा, कोई बोल सकता है? ओके, माई एग्जिस्टिंग वेंडर supplies me a good of rupees 100, but I have to pay him in 15 days. I hired a consultant. He got me a deal from a different vendor of that same goods at same rupees 100, but now I have to pay it in 30 days. इससे क्या इंपैक्ट आएगा? एग्जैक्टली सर, ऐसे भी स्ट्रेटेजीज होते हैं. एंड ये आपको अभी छोटा लगेगा, जब बिजनेस करोड़ में होते हैं ना, दिस प्लेस लाइक अ वंडर. दिस एडिशनल 15 days ऑफ ऑक्सीजन इज लाइक समथिंग एल्स टू देम. ये ऐसा है 15 दिन, जब जैसे बोला ना कि कोई बैंक्रप्सी या रफ फेज से जब गुजर रहा होता है, तो ये 15 दिन ऐसा लगता है कि फ्लाइट टर्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं आ रहा और वो मास्क नीचे आ गया आधा घंटा के लिए. तो इट जस्ट फील्स लाइक दैट. So that 15 days is exactly the same for them. This way also negotiation happens. तो ये भी strategies होती हैं. यहाँ जो हमने supply chain consultancy लिखा, यहाँ पे भी the same strategy applies. जहाँ पे आपका जो supply chain है, what is supply chain? आपके vendors जो आपको supply कर रहे हैं, आपके customers जो आपसे खरीद रहे हैं, हम उनसे strategy उस तरह से करते हैं, या तो आप मानो मेरे पेमेंट टर्म्स को या मेरे प्राइसेस को रिवाइज करो, या हम कोई और वेंडर से जो कि रिलायबल और सेम आपके क्वालिटी पे सप्लाई करता हो उनसे नेगोशिएट करें. अभी आप बोलते हो यार ये तो बहुत आसान है, मैं खुद ही कर सकता हूं. आई एज अ फाउंडर कैन माई सेल्फ डू इट. व्हाई डू आई नीड अ कंसल्टेंट फॉर दिस? सर, व्हेन द बिजनेस रीचेज अ लेवल, आपके पास सांस लेने का टाइम नहीं है, आपके पास ये करने का टाइम नहीं है, आपको पता ही नहीं है कौन से वेंडर्स क्या आपको टर्म्स दे सकते हैं. You don't have the time, you are so much into fund management, the bank account balance, paying the salaries, getting the money from the customers, yet माल time पे नहीं आया है कि you don't have time for these. So why will we pay crores for this consultancy, BCG, McKinsey, they charge crores for this consultancy. वो क्या बिजनेस वाले पागल हैं जो उनको crores दे रहे हैं? बिजनेस का एक ही रूल है, अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो मिनिमम मेरे को 10 करोड़ का फायदा चाहिए, वरना मैं क्यों दूंगा? This is how business is done. If अगर today in my office somebody comes up and says कि सर आप जो अभी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो इसका कॉस्ट ये है, उसमें आपके एम्प्लॉय का 200 मैन आवर्स लग रहा है, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर देता हूँ 10% कम में, उसमें आपका 50 मैन आवर्स में हो जाएगा, देन ओनली आई विल बी इंटरेस्टेड. अगर आप सेम दूसरी कंपनी आके मेरे को अप्रोच करे कि सर मैं आपको सिर्फ 10% कम में दे दूंगा और आपका मैन आवर्स तो सर ज्यादा ही हो गए हो, मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा. मैं कहा क्या भाई, मेरे तो टाइम ही नहीं दूंगा. मैं कहा जा मेरे पियोन से बात कर. Why will I waste my time in that? See, अगर आप कंसल्टेंसी में हो, your time is your money. I don't have any goods to sell, no? मेरे पास कोई गुड्स नहीं है कि मैंने फोन में उठाया कि हाँ भाई माल का ऑर्डर आ गया, खरीदा, बेच दिया. It is my time, so I have to be very diligent with my time. आपको भी समझना है, आपके फाउंडर्स को भी समझना है कि उनका क्या इंपॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली उस पर काम करना है. So there are cost reductions and supply chain optimization
प्रोजेक्ट्स. नाउ यू मे से कि सर यार नॉर्थ ईस्ट में कौन सा इंडिगो जैसा लेवल का कंपनी हम लोग बना रहे हैं कि हम लोग को ये सब काम आएगा. यार इंडिगो जैसा कंपनी नहीं बना रहे, तो अगर कोई छोटा भी कंपनी है जिस जो थोड़े क्रोर्स में भी जाता है, तो भी आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो ना स्ट्रेटेजीज. यू डोंट हैव टू पे क्रोर्स इन द फी टू द कंसल्टेंट. आप अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल. नो, फर्स्ट टेक एटलीस्ट ये स्ट्रेटेजीज पता होंगे तो यू विल कंसल्ट समबडी कि सर दिस इज हाउ आवर पोजीशन इज, यू टेल अस दैट हाउ कैन यू गिव अस अ बेनिफिट एंड व्हाट विल बी योर फी. एटलीस्ट हैव अ डिस्कशन. नो, अगर आपको फायदा लगता है तो लो, वरना कोई गन थोड़ी रख रहा है आपके माथे पे कि नहीं लेना ही पड़ेगा. So you must be aware of the nature of services available in the market so that you can accordingly educate your founders. Yes sir. I'll tell you one thing. There is the Indigo का जो CEO था, his name was Mr. आदित्य घोष. ठीक है, उनके YouTube पे आप कभी कोई वीडियो उठा के देखना, उनकी स्ट्रेटेजीज को सुनना, उन्होंने क्या ऐसा किया जो बाकी एयरलाइंस नहीं कर पाए एंड उनको उस चीज से कैसे फायदा हुआ. एक और रीजन बताता हूं. ही टाइम्ड द मार्केट. हाउ? एयरलाइन में द बिगेस्ट कॉस्ट इज एयरलाइन इटसेल्फ, देन देयर इज फ्यूल. नाउ फ्यूल भी डिपेंड करता है आपका इंजन कितना है, वेट कितना है, ताकि वो जितना फ्यूल एफिशिएंटली बर्न करता है, राइट? जो हम लोग माइलेज कहते हैं नॉर्मल गाड़ी में, वहां पे भी डिपेंड करता है. अगर फ्लाइट का वेट ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा तेल जलाएगा, ज्यादा तेल पिएगा. इंजन का एफिशिएंसी भी डिपेंड करता है कि वो अगर इंजन इतना एफिशिएंट नहीं हुआ, ज्यादा तेल जलाएगा तो ज्यादा खर्चा आएगा. फ्यूल कॉस्ट इज नॉट इन योर कंट्रोल बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एयरलाइन टर्फ ATF फ्यूल. उन्होंने क्या किया, जब बिगेस्ट कॉस्ट इज एयरलाइन कॉस्ट, दे नेगोशिएटेड विद द एयरलाइंस उस समय जहां पे कोई ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर रहा था. कैसा? कोविड आया. करेक्ट, कोविड आया. एवरीबडी सॉ इट कि भाई अब क्या होगा, हमारा बिजनेस कहां जाएगा. उन्होंने वहां अपॉर्चुनिटी देखा. उन्होंने एयरबस बोइंग से ऐसा डील किया कि उनको ऐसा डील मिला जो और किसी एयरलाइन को मिल नहीं सकता. तो दे प्लेड स्ट्रेटेजिकली. नाउ he has moved to Akasa and he is trying to apply the same strategy over there. Obviously, Mr. Rakesh Jhunjhunwala is no more. It was a coalition between Rakesh Jhunjhunwala and Aditya Ghosh. और भी 2-3 लोग हैं, but he is trying to do the same thing with Akasa. तो सर कॉस्ट रिडक्शन का ना एक अपना बहुत बड़ा रोल है एंड ये इजी नहीं है. मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सबको पता है कि कॉस्ट रिड्यूस करो तो मेरे एयरलाइन चल जाएगा तो सभी कर लेंगे, बट सर ये इंप्लीमेंट करना हो नहीं पा रहा है बाकियों से. और द मेजर थिंग इज सर, एक एयरलाइन अगर आपका 100 करोड़ का कॉस्ट कर रहा है एंड अगर वही मैं 50 करोड़ में ले लिया होता और दूसरा मेरे का 80 करोड़ में ले रहा है, तो दैट 30 करोड़ विल अगेन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस नो फॉर द नेक्स्ट 5 years 10 years ऑल्सो. तो अगर मेरा खर्चा ही कम है, मेरा कॉस्ट कम है, तो मैंने स्ट्रेटेजिकली खेला. नहीं सर, यहाँ पे भी अलग चीज है. मैं एक बात बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ. हाँ, that is happening, but सर दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द सेक्टर. आपने सिर्फ अभी गुवाहाटी से सेक्टर से ट्रैवल किया ना, फॉर एवरी सेक्टर दैट इज नॉट ट्रू. हाँ हाँ, ऑब्वियसली एवरीथिंग मेक्स अ डिफरेंस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीथिंग मेक्स अ डिफरेंस. एक और एग्जांपल देता हूँ. व्हाट दे डिड वाज इन इंडिगो दे मेड अ स्ट्रेटेजी कि जब कोई एयर होस्टेस आप देखोगे कि जो फ्लाई होते हैं तो उनको स्टे देना पड़ता है. सपोजिंगली आई फ्लाई फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली एंड आई स्टे इन दिल्ली एंड द नेक्स्ट डे आई हैव टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी. सो दे हैव टू ऑफर स्टे टू द एयर होस्टेस और द मेल एयर होस्टेस. उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग फीमेल एंड मेल, उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दिया. क्या किया कि अगर 2 जन जा रहे हैं तो बोथ विल बी मेल. अब बताओ ऐसा क्यों किया? एग्जैक्टली दिस इज एनालिसिस टू द टी. ये किसी के दिमाग में और क्यों नहीं आया? इंडिगो के दिमाग में क्यों आया? तो सर देयर आर मेनी स्ट्रेटेजीज, मेनी थिंग्स. उसको डिस्कस करते रहेंगे तो पूरा क्लास आज उसी में चला जाएगा.
नाउ किसी ने ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस देखा है कभी? अभी तो शायद हम स्टार्ट ही कर रहे हैं. सो जब प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल पैसा डालता है किसी भी स्टार्टअप पे, एक ड्यू डिलिजेंस होता है. दैट ड्यू डिलिजेंस इज आइदर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और लीगल ड्यू डिलिजेंस. लीगल ड्यू डिलिजेंस इज फ्रॉम द लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इज कि आपके नंबर्स कैसे हैं, हु आर द मेजर कस्टमर्स, हाउ आर द रेशियोज. क्यों करते हैं ये? Why do ये ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस क्यों होता है? We will experience it as and when we go forward with the incubation program. आपके कुछ कुछ स्टार्टअप्स होंगे जो फंडिंग उठाएंगे. तो जब फंडिंग उठाएंगे किसी भी प्राइवेट इक्विटी या वेंचर से, एंजल इन्वेस्टर ये सब इतना नहीं करता. वो बस कंपनी देखता है, सेक्टर देखता है. दे सी द कंपनी, दे सी द सेक्टर एंड दे put in the money. But when it comes to, has anybody heard of Blackstone? 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 It is a private equity company. Premji Invest? It is again a private equity. These are the top private equity companies of India. ये जब भी पैसा लगाते हैं ना, बिना ड्यू डिलिजेंस के नहीं लगाएंगे. Whenever they put in the money, they will never do it without any due diligence. And the company in which they put in the money, one of their member is a part of your board. वो आपके board of directors में बैठते हैं. They look into the affairs of the company. They treat you like their own child, and then they grow your company. So एक experience अगर ऐसा होगा किसी का, तो you'll understand. Due diligence में it is different from normal audit. How? Because they analyze your debtors, they analyze कि आपका business कहाँ से आ रहा है. They want to see the normal business line, कि आप जो पैसे कमा रहे हैं वो normal business में आप कितना sustain कर पाओगे. Anybody has heard of this EBITDA term? EBITDA क्या होता है सर? EBITDA depreciation and amortization, right? तो why अच्छा, वैल्यूएशन का हाउ मेनी ऑफ आर वी, मतलब हाउ मेनी ऑफ वी आर कंफर्टेबल इन वैल्यूएशन की? हाँ, वैल्यूएशन ऐसे होता है, वैसे होता है. कैसे होता है वैल्यूएशन किसी कंपनी का या स्टार्टअप का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मैम. देखिए, अगर वो पैसे लगाने के उसमें है तो वो वैल्यूएशन एसेट पे नहीं होगा. वो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के लिए एसेट से देखा जाता है कि एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, नेट ऑफ करके बुक वैल्यू पे जीरो करके. वो नहीं सर. जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो वैल्यूएशन कैसे देखते हैं? एनी आइडिया? नहीं. फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से. पार्टली करेक्ट. तो वैल्यूएशन हैपेंस एट टू मल्टीपल्स, either revenue multiples or EBITDA multiples. Revenue multiples पे कब होता है? Revenue multiples पे तब होता है when the company is into losses, they are EBITDA negative या they are not making profits. अगर जो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रहा, EBITDA नेगेटिव है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? There are many companies who were into losses but still they got investment from investors at a good valuation. तो how did that happen? That happened because of multiples of valuation in revenue. ठीक है. Now हर सेक्टर में अलग अलग चलता है मल्टीपल्स. नाउ यू में से कि सर मेरा तो एफएमसीजी कंपनी में तो मल्टीपल्स अलग होगा वैल्यूएशन का. वैल्यूएशन सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता. इट डज नॉट डिपेंड ऑन वन फैक्टर. देयर आर वेरियस फैक्टर्स. हाउ एथिकली यू हैव ग्रोन द रेवेन्यू. Is it just because of one customer who has given you more revenue? Is it because of more and more customers getting, added to your streamline in your bouquet, and then you are growing the revenue? Or is it like you have once in a year, supposedly in last 2-3 years, I saw the revenue grow at 30%, but the last year I saw my revenue grow at 100%. तो लास्ट ईयर मैंने वैल्यूएशन करा के ज्यादा पैसा ले लिया. हो सकता है ना केस की मेरे एक साल में बहुत अच्छा हुआ, मैंने वैल्यूएशन करा के पैसा ले लिया. इन्वेस्टर देगा क्या? नहीं देगा. वो ड्यू डिलिजेंस कराएगा एंड ही विल सी द रीजन फॉर दैट 100% इंक्रीज इन योर रेवेन्यू. If it is one off case, like supposedly just once the customer came and gave you good business, they will just write it off. Like they'll not consider that revenue because they want to invest in something which is recurring in nature. अगर वो कस्टमर को फ्यूचर बिजनेस नहीं देगा, वो पैसे नहीं लगाएंगे. Supposedly you entered a different market. You were selling in Assam,
one order you got from Nagaland, you fulfilled it, and then it's over. आपको और business नहीं आया, so they will not consider the revenue from Nagaland that you earned that year. So that is called normalized EBITDA, normalized revenue. They normalize your revenue, they analyze कि revenue कितना आपका normal आता है during the course of business, and उसका multiples पे देते हैं. The same thing happens with EBITDA. Since EBITDA adjusts your expenses, they analyze your one time expenses also. कोई ऐसा expenses तो नहीं है जो one time है, हर साल रेकर नहीं करेगा, तो उसको वो हटा देते हैं और आपका नॉर्मलाइज EBITDA देखते हैं, उसका मल्टीपल्स वो वैल्यूएशन पे करते हैं. अच्छा, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन वैल्यूएशन इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस. अभी तो एट अ वेरी इनिशियल स्टेजेस इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस कि सपोजिंगली इफ यू आर अ ट्रेडर, आपने परचेज किया, बेच दिया. बट देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस आल्सो जिनका वर्किंग इज वेरी डिफरेंट, द नेचर इज वेरी डिफरेंट, लाइसेंसिंग इज डिफरेंट, वाइन इंडस्ट्री इट इज डिफरेंट क्योंकि द लाइसेंस रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, natural gas industry it's again very different, the working is different. So every industry, every business is very different, it's very unique. So understanding the business, if you ever want to be an angel investor, then the first step, just don't go into the numbers, please try to understand the business to the T. पूरा एक एक क्लैरिटी होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे ये बिजनेस में प्रॉफिट्स आ रहे हैं. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, देयर इज नो पॉइंट एनालाइजिंग द नंबर्स. पहले बिजनेस समझो, फिर नंबर समझो, एंड देन टेक अ कॉल. Now comes the regulatory compliances. It is applicable for everyone, be it a startup, be it a normal business, be it a listed company. तो स्टार्टअप्स में द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई सी पीपल फेस इज कि सर हमें क्या कंप्लायंस करना है, व्हाट आर द कंप्लायंसेस वी नीड टू डू. आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है टू गाइड देम, नथिंग मच. सी इफ एनीबडी वांट्स टू अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट टेंडर या गवर्नमेंट एजेंसीज से अगर दे हैव टू डू द बिजनेस, देन गवर्नमेंट एजेंसीज विल डेफिनेटली आस्क फॉर द जीएसटी नंबर इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर. ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव सीन. देयर मे बी एन एक्सेप्शन जहां पे नहीं चाहिए होगा, आई डोंट नो, but I have not seen that. Wherever my clients have dealt with government agencies, be it supply or anything, there is a need कि you will have to have a GST number. Once you have a GST number, then it does not matter whether your turnover is 5 lakh rupees, 20 lakh rupees, 40 lakh rupees. You have to comply with the GST law. ठीक है, this is what the law says. एक बार registration ले लिया तो भाई खत्म. Then you will have to file the monthly returns or quarterly return as the case may be and comply it fully. Please don't play around or take the compliance very lightly. There have been numerous cases in the past where people have just taken the registration, they're not filing the returns, then they've got a love letter from the department, then they run after the department कि सर ये ठीक कर दो, वो कर दो, वो कर दो. That's वो ज़्यादा cost करेगा rather than just maintaining that. Okay? Do you feel filing of income tax return is important even if my income is not very much? Like अगर मेरा income is somewhere around, अच्छा, for this year that has gone by, March, how much is the exemption limit? कितना income tax नहीं देना? 12 lakhs. Okay, anyone else? The year that has gone by, sir, March. करेक्ट सर, करेक्ट. तो अभी जो फाइल करेंगे हम लोग उसका लिमिट इज 7 lakhs न्यू स्कीम में. So it's new scheme. Old scheme में it is still 2.5 and up to 5 lakh rupees वो जो अपना 12,500 बनता है वो नील कर देंगे. तो old scheme में it's 5 lakh rupees, new scheme में it's 7 lakh rupees. अच्छा, do you feel कि I am supposedly filing my return under new scheme, my income is only 4 lakh or 5 lakh rupees, should I file my ITR? यार इनकम तो लगना नहीं, फालतू में सीए को 1,000-1,500 रुपए दो या किसी को भी दो, क्यों फाइल करें यार? मतलब डू यू फील इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई? बाद में चाहिए होता है. और कोई? सॉरी, फॉर्म 16 चाहिए होता है. फॉर्म 16 तो आपका एम्प्लॉयर देगा मैम, उसका आईटी से क्या लेना. अच्छा, मैंने टीडीएस का रिफंड. अच्छा,
if someone, I did not get your question. Housewife 7 lakhs, okay, 5, हाँ ठीक. Sir, if your income is not taxable, then there is no problem. But then, why do you, मतलब my just out of curiosity, I am saying is कि आप फाइल क्यों नहीं करना, मतलब why you don't want to file the return? एक्स्ट्रा टाइम मतलब आपका क्या टाइम जा रहा है? आपको तो बस पैसे देने हैं 1000-1500 रुपए और वो फाइल कर देगा. हम्म. Sir, as I said, it, हाँ नहीं नहीं, I agree. Sir, this is what the thing you said is true for 90% of the people. Okay, they are saying कि भाई जब जरूरत नहीं है मैं क्यों फाइल करूं. Okay, now I come to the point कि it may not be relevant for you today, but it may be relevant for you 6 months down the line when you start मतलब I have seen cases जहाँ पे they did not file it, but then 6 महीने बाद कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आया या कोई किचन का सप्लाई का क्लाउड किचन का ऐसा ऑर्डर आया जहाँ पे अब उनको लोन चाहिए, तब वो बैंक उनको दौड़ा रहे हैं कि अब आप आईटीआर लेके आओ हमारे पास ये लेके आओ वो लेके आओ. तो जब आप बाद में फाइल करोगे सर, फाइल तो हो जाएगा लेकिन 1000 रुपए तो सिर्फ लेट फी में जा रहा है ना. आपको एनी विच वे उसको फाइल करने का प्रोफेशनल को पैसे देने ही है. तो साल का 1000-1500 रुपए मत सोचिए सर. डोंट थिंक ऑफ दैट. थिंक ऑफ इट कि भाई यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, हैड अ गुड फूड एंड देन केम बैक, फिनिश. वो डोंट थिंक ऑफ दैट एंड ट्राई एंड उससे क्या ना कैपिटल बिल्ड होगा सर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज if you still file your return on a year basis, you are building your capital so that once it is required you can show that in your balance sheet that you had this much of capital. vis a vis 4 साल 5 साल का बैलेंस शीट बनाने में बहुत खर्चा आएगा एक बार में बनवाओगे किसी से तो, बिकॉज दे आर पुटिंग इन द टाइम. वही आपका 1000 रुपए 1500 रुपए में साल में अगर काम हो रहा है, जस्ट गेट इट डन. एंड इफ ट्रूली द इनकम इज ओनली 4 लाख रुपीज एंड 7 लाख तक गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं दे रहा है तो थोड़ा बढ़ा के कर दो ना कैपिटल अपना. टैक्स तो ऐसे भी नहीं लग रहा है ना. कमीशन इनकम हो गया या कोई भी ट्रेडिंग इनकम हो गया या नॉर्मल कैपिटल इनकम हो गया, कुछ भी इनकम, इट बिल्ड्स योर कैपिटल. नो, और डोंट डू इट बट जस्ट पुट इन 4-5 लाख रुपीज जो भी आपका इनकम है, इट स्टिल बिल्ड्स योर कैपिटल. दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज एंड इट हैज हेल्प मेनी पीपल गेट समथिंग. आप जैसे होम लोन भी लेना है सपोजिंगली, अब होम लोन में इंटरेस्ट और उसमें 80C में रिडक्शन है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है. नाउ पीपल इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लोन अंडर वन नेम, दे से कि हम जॉइंटली लेना चाहते हैं ताकि हम लोग दोनों का 1.5 लाख रुपए मिलकर 3 लाख रुपए मिल जाए. तो अगर आपकी वाइफ का कोई इनकम ही नहीं है तो वो लोन ही नहीं देगा. अब वहीं अगर आपने 4-5 लाख रुपए का आईटीआर डिक्लेयर किया होता तो कुछ तो एक इनकम रहता, तो वो आपको एक ईएमआई उनका भी बना के देते दोनों का साइड से. तो एडवांटेज तो है सर. बीट बिजनेस आप चालू करना है, बैंक का लोन लेना है, होम लोन लेना है, एडवांटेज इज देयर. इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी केसेस जहां पे आपको पता ही नहीं है कि आपका टीडीएस कटा था, आपका टैक्स कटा था आपके पैन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट को जमा हुआ था, आपको पता ही नहीं है, आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, वो पैसा तो गवर्नमेंट का हो गया, आपको तो जिंदगी में मिलेगा उसका रिफंड. नॉर्मल केसेस में तो अगर आपका सैलरी से टीडीएस कट रहा है वो पता होता है, वो आप ले लेते हो रिफंड आईटीआर नील फाइल करके. बहुत सारे ऐसे अदर केसेस है जैसे डिविडेंड में आपका टीडीएस कटा बाय चांस, कोई कंपनी में आपने पैसे लगाए, उसका डिविडेंड आया, उसमें टीडीएस कटा, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, उसमें क्या पता उसने टीडीएस काट लिया हो, एफडी से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें उस बैंक ने टीडीएस काट लिया हो. आप जब तक आईटीआर फाइल नहीं करोगे, अपना 2026 एएस टीआईएस टीआईएस को एनालाइज नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा. तो डोंट थिंक ऑफ दिस 1000-1500, करवा लो फाइल. दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज. यू मे ऑब्वियसली हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. और नाउ कम्स टू आरओसी फाइलिंग्स. वी मे हैव हर्ड और यू मे हैव हर्ड, यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू कर लिया तो बहुत खर्चे हैं यार उसको मेंटेन करने के. इट इज कॉस्टली टू मेंटेन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. हैज एनीबॉडी हर्ड दिस? It is costly to maintain a private limited company. कोई और? Anybody else? Do you think maintaining a private limited company is very costly? No, ma'am, it is not true. This is a misinformation. If you are doing normal business,
एक्सेप्ट फ्रॉम ऑडिट. देखिए ऑडिट इज रिक्वायर्ड इफ योर टर्नओवर इज नॉट मच. वो भी बहुत आज के डेट में इट डज नॉट कॉस्ट यू बॉम्ब 20,000 50,000, ऐसा नहीं होता है. इफ इट इज नॉट मच अ ट्रांजेक्शन विद इन 10,000 सारा काम हो जाता है. एंड टू मेंटेन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपार्ट फ्रॉम ऑडिट इट जस्ट कॉस्ट यू बिटवीन 7 to 8,000 रुपीज अ ईयर. तो कैसे महंगा हुआ? हाँ, ऑब्वियसली इफ योर टर्नओवर इज मोर तो वो तो आप पार्टनरशिप कर लो चाहे प्रोप्राइटरशिप कर लो. वो जो खर्चा है, सी above 20 lakh rupees, all 20 or 40 lakh rupees, all the expenses are same. How? GST आप प्रोप्राइटरशिप होते तो भी फाइल करना पड़ता, प्राइवेट लिमिटेड तो भी फाइल करना पड़ेगा. इनकम टैक्स रिटर्न आप प्रोप्राइटर हो तो भी फाइल करना पड़ता, प्राइवेट लिमिटेड तो भी फाइल करना पड़ेगा. 2 crore के नीचे हो आप, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप नहीं हो, बस आपको अपना ऑडिट ही तो नहीं कराना, प्राइवेट लिमिटेड में बस वो कराना पड़ेगा. तो द ओनली डिफरेंस दैट दिस कंपनी इज मेकिंग इज ऑडिट जो ईयरली है उसमें ट्रांजेक्शन आपका ज्यादा नहीं है, तो इट विल नॉट कॉस्ट यू मच. हाँ, केवाईसी, एनुअल केवाईसी जो करना है, फाइलिंग करना है, एडीटी 1, फिर बिजनेस कमेंसमेंट, वो पूरे साल में ना 7-8 हजार से ज्यादा नहीं लगता. इट डज नॉट कॉस्ट यू मोर देन 7-8,000. एंड आई थिंक एट टूडेज टाइम if you are doing business and if you are maintaining a private limited company, the benefits exceeds this 7 to 8,000 rupees. This is what I feel. You may have a different opinion. So it is not at all costly to maintain a private limited company. There has been a misinformation and वो डर बैठा रखा है लोगों के मन में कि it is costly to maintain a private limited company. Obviously, अगर normal business operation है तो नहीं है, but अगर हाँ, if you are raising funds, getting money from the investors, then this cost exceeds, क्योंकि there are various ROC filings that you have to do. लेकिन जब पैसे आ रहे हैं तो फिर खर्च करने में भी क्या दिक्कत है? इन्वेस्टर्स, रजिस्टर ऑफ कंपनीज. तो वंस यू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, you have to fill in and submit various forms to MCA, Ministry of Corporate Affairs. उसको ROC filings बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनी, रजिस्टर को फाइल करते हैं. लेबर लॉस. How many of you are aware of PF, ESI rules and professional tax rules, trade license, all those things? ये भी तो compliance जरूरी है. हाँ सर. सर एक बात बताइए, I have a question. Is trade license really required if I want to do business in Guwahati or other than Guwahati भी, अगर दूसरा एरिया में? बहुत लोग तो नहीं लेते हैं. चाहिए क्या? चाहिए. हाँ, you would see possibility. Any other view? कैमरा ऑन तो नहीं है सर, ये हो जाएगा फिर. एक केस हुआ, गुवाहाटी का ही है, उसने ट्रेड लाइसेंस लिया, जेन्युइन बिजनेस कर रहा था, सब है, रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, ट्रेड लाइसेंस है, ऑनेस्टली अपना फाइलिंग कर रहा था. इंस्पेक्शन में डिपार्टमेंट आया, कहता आपका ट्रेड लाइसेंस कहाँ है? उसने ड्रॉर खोला, निकाल के दे दिया. कहता रूल्स के हिसाब से तो ये चिपका होना चाहिए आपके एंट्री गेट पे, चिपका हुआ नहीं है, फाइन लगेगा. रूल्स के हिसाब से आपके यहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए, डस्टबिन नहीं है, फाइन लगेगा. आप बिजनेस चला रहे हो, रूल्स के हिसाब से आपके एनजीओ के साथ टाइप होना पड़ेगा, आपका जो वेस्ट हो रहा है वो एनजीओ आपका इतना महीना में या इतना दिन में आके कलेक्ट करके जाएगा, वो आप अग्रीमेंट दिखाओ एनजीओ के साथ, नहीं है तो फाइन लगेगा. तब ये 3 चीज बोला, तो एज अ बिजनेसमैन आप क्या करोगे? मेरे तरफ, आपकी तरफ नहीं है. एनी विच वेज, जस्ट जोकिंग, दिस इज अ वन ऑफ केस, हर जगह नहीं होता है. तो बी कंप्लायंट विद एवरीथिंग. आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना है, यू हैव टू एजुकेट योर इनक्यूबेटीज कि प्लीज टेक ट्रेड लाइसेंस. अगर वो कामरूप मेट्रो में जैसे गुवाहाटी एरिया में है तो जीएमसी देता है, इट्स ऑनलाइन, यू कैन गेट इट डाउनलोडेड योरसेल्फ आल्सो, यू डोंट हैव टू हायर एनी प्रोफेशनल फॉर दैट. आप अगर कामरूप में या गुवाहाटी में नहीं हो तो जो लोकल म्यूनिसिपल है वो आपको ट्रेड लाइसेंस इशू कर देंगे, आप जाके ले लो. अगर आपको करंट अकाउंट खुलाना है किसी भी बैंक में तो ट्रेड लाइसेंस इज अ मस्ट. तो आप बैंक अकाउंट तो खुलाओगे ना बिजनेस के नाम पे, यू नीड अ बैंक अकाउंट, सो फॉर दैट ट्रेड लाइसेंस इज अ मस्ट. ओके, नाउ कम्स टू trade license is something please encourage your founders or incubators to please take a trade license to start a business.
दैट डज नॉट कॉस्ट मच ऑल्सो. गुवाहाटी में शायद अगर आप बिजनेस करते हो अप टू सर्टेन लिमिट इट इज ओनली 1850, एंड आउटसाइड ऑफ गुवाहाटी तो कॉस्ट और भी कम है. Obviously, this varies from business to business, but mostly it is 1850 rupees for a year. Now, comes to PF and ESI. Sir, PF and ESI में registration लेना compulsory है क्या? Is it compulsory? For both PF ESI? $20,000 सर. इंडिया में हम सर लंदन से बाहर आ जाइए. PF ESI, is it compulsory? It is not. So up to 15 employees for PF and 20 employees for 10 shop and establishment का अलग अलग rules है. 10, 15 and 23 limits are there. वो आप चेक कर लीजिए. Gratuity PF and ESI का. If you have those employees, then please take PF and ESI registration. These departments are very much active these days. They have their own inspection rules. and एक बार पकड़ लेते हैं तो खाया पिया सारा निकाल देते हैं. ठीक है. So for PF I guess it is 10. For ESI I guess it is 15. एक बार लिमिट्स फिर भी चेक कर लीजिएगा. आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली. ठीक है. नाउ इफ यू हैव सपोजिंगली टेकन अ पीएफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सपोजिंगली द लिमिट वाज 10 एम्प्लॉइज फॉर पीएफ. ठीक है. I have 10 employees. I have taken the PF registration. Now, after taking the registration, 2 employees have resigned. I have only 8 registration. Only 8 employees. Am I still eligible to? मतलब हमें क्या PF फिर देना पड़ेगा? PF देना पड़ेगा क्या? रजिस्ट्रेशन लेना फिर से मतलब कंटिन्यू रखना है? आई कैन सरेंडर इट. सर कंटिन्यू करना पड़ेगा. एनी अदर ओपिनियन? इट इज जस्ट लाइक जीएसटी. एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो कंटिन्यू करना पड़ेगा. इवन इफ इट इज 8, इवन इफ इट इज 2. सर supposedly there may be a case. It was a case with one of my startup founder. He had only 5 employees. Okay. 2 of the other employees who he was hiring were in an organization जहां पे उनका पीएफ कटता था, उनको पीएफ मिलता था. Now they are coming to an organization जहां पे पीएफ नहीं है. तो अभी क्या करना पड़ेगा स्टार्टअप फाउंडर को? Will he have to compulsorily take PF registration? नहीं मैम, तो उसमें मेरे को भी तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना. इन पीएफ द रूल सेज पीएफ एंड ईएसआई 12% you will contribute, 12% as an employer I have to contribute. In ESI also 0.75% and 3.25 का रूल है. 0.75% you contribute, 3.25% I contribute. तो आप पीएफ में रजिस्टर्ड हो, मैं तो नहीं हूं, तो why will I contribute 12% and 3.75%, 3.25%? क्या करूं? आप कह रहे हो कि यू विल जस्ट पे योर पार्ट एंड द एम्प्लॉयर विल नॉट पे माय पार्ट. He has to pay both the parts. Supposingly, sir, you are working in an organization where your PF and ESI is getting deducted and you are getting the benefit for that. You come to my organization. In my organization, there is no PF ESI because the limit has not been extended. मतलब एक्सीड नहीं हुआ और मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है. What मतलब you are telling me ना, अभी आपका तो PF ESI है, तो अब मैं क्या करूं आपके केस में? मतलब will I have to take PF ESI registration? तो सर आपका फिर क्या होगा? Correct. So it is not compulsory to take the registration if I am not exceeding the strategy. Obviously voluntarily कर सकता हूँ, that is a different thing. But as per law I am not required to. तो आपके केस में क्या रहेगा? जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उसका ईयर ऑन ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा. आपको जब आप विड्रॉ करना आप कर सकते हैं. ठीक है. एक केस ऐसा हुआ जहां पे द एम्प्लॉय स्टेड एडमेंट कि नहीं है, मेरे को तो चाहिए ही. अब क्या करेगा वो? सिर्फ उसका 12% के लिए बाकी 5 एम्प्लॉयज का तो नहीं देगा ना. और ऐसा भी नहीं कर सकता कि सिर्फ उसको देगा बाकियों को नहीं देगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ले लिया, वंस ही हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन सबको देना पड़ेगा. क्या करें इस केस में? वो एम्प्लॉय भी चाहिए, दैट एम्प्लॉय इज इंपॉर्टेंट टू हिम. तो सर व्हाट वी सजेस्टेड एंड व्हाट वी डिड वाज, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग एन ईपीएफ अकाउंट हमने उनका पीपीएफ करवा दिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. तो क्या हुआ, जितना मेरे को कंट्रीब्यूट करना था
और जितना एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना था, सपोजिंगली आपने 1000 रुपए देना था, मैंने 1000 रुपए देना था, what we did was we took 1000 rupees from you, we contributed another 1000 and did not do it in pf, we did it in ppf. आपका 2000 रुपए हम ppf में डाल दिया हमने, हर मंथ 2000 आपका ppf. so what happened was आपका काम भी हो गया, हमारा काम भी हो गया. सर आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरा ऐसा प्रैक्टिकल केस नहीं. हाँ, PF I think it's 8.5 right now and PPF में around 7.5 है, 7. हाँ थोड़ा तो फर्क है मैम, बट उसमें कंपाउंडिंग में मिलता है ना, यू गेट द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ जाता है, फिर वापस वो इंटरेस्ट का पार्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है. मैम पीएफ में तो आपको रिटायरमेंट तक रुकना पड़ेगा ना, अनटिल एंड अनलेस मेडिकल इमरजेंसी है. तो मैम 15 साल और रिटायरमेंट में तो फर्क आ गया ना. The objective of PF and PPF is long-term savings, so the objective is intact. सर EPF PPF तो पता है, GPF क्या होता है? अच्छा अच्छा OPS, those who are under OPS, old pension scheme, they have a kind of PF which is known as GPF. And against the GPF, they are entitled to get a loan. And they can withdraw a portion of GPF before their retirement also. Okay. Such kind of schemes are also there. Just kind of discussion, should we are discussing in this matter. I don't know how much it is. Sir, in government, any which ways like NRN and all, they have their own funds, sir. They have their own PF fund. They have their own annual endowment fund. So वहाँ पे क्या है, they don't deposit the money. So generally what happens is, if in a private sector, I deduct your PF, I deposit it to the PF department. ठीक है? In organizations like government, NRN and all, उनका खुद का एक fund है. They have their own PF fund where they don't deposit the money to the central PF. They deposit that money in their internal PF fund. फिर वहां से वो आपको पेमेंट जाता है. The same thing happens with gratuity also. आप उनके ग्रेचुटी को देखना, दे हैव देयर ओन ग्रेचुटी फंड. वो हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता, बट देयर आर मेनी लाइक एनआरएल. ओके, बट देयर आर सम गवर्नमेंट एंटिटीज, पीएसयूज एंड महारत्ना कंपनी जिनका खुद का फंड है. दे डोंट डिपॉजिट टू द पीएफ डिपार्टमेंट, दे डिपॉजिट टू द, यस एग्जैक्टली, पीएफ ट्रस्ट. यस, तो वो अपने ट्रस्ट में डिपॉजिट करते हैं. Any which ways, limit for PF is I guess 15,000 and the limit for ESI is 21,000. And voluntarily भी आप कर सकते हो, अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो 15,000 का 12% comes out to 1,800 rupees. You can still convince your employer कि आप एटलीस्ट मेरे 1,800 rupees कंट्रीब्यूट कर दीजिए एंड 1,800 मेरे सैलरी से काट लीजिए. इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉयर. द एम्प्लॉयर इज नॉट बाउंड to give you PF if your salary exceeds 15,000 rupees. It depends on the organization policy. There are some organizations जो बोलते हैं irrespective हम सबको PF देंगे, अगर आपका 15,000 से ज्यादा है तो 15,000 पे दे देंगे, but 1,800 तो हम देंगे. There are some organizations जो voluntarily करते हैं, आपको करवाना है तो आप कटवा लो, वरना हम तो voluntarily नहीं देंगे. The same thing applies for ESI. ESI में the limit is 21,000 and 21,000 से exceed करते हैं तो they are not compulsory required. ESIC में there is mediclaim also. ESIC के against आप 5 lakhs तक का देयर इज अ मेडिक्लेम, वो ठीक है. हॉस्पिटल्स भी हैं. अच्छा, in this income tax clause, if your salary is not exceeding the taxable limit, you know ना, you have a right to declare it to their employer and say that कि हमारा TDS मत काटो. Everybody is aware, no, कि if your salary is not exceeding the limit
for income tax, then you can give a declaration to your employer that my salary is not exceeding the limit. Please don't deduct my TDS. Otherwise, what you have to do is, जब TDS कटेगा, तो you will have to file the return and take the refund for it. ठीक है? There are many people who are not, who उनको लगा उतना ही उनका सैलरी है, लेकिन उनका सैलरी से TDS कट रहा था, उनके अकाउंट में जमा हो रहा था. They were not aware, they did not file the ITR, and they lost out on the TDS part, which is very sad. Even a small amount is your hard-earned money. Please don't let it go. Okay? Now, there may be a scenario where a startup was incubated under your incubation program. They have started it. Now they want to scale their startup. Okay? To scale the startup, there has to be proper processes in place. It is called process audit or internal audit. In internal audit or process audit, there are various processes where every process has to be standardized. Once the process is standardized, it is easy to scale the startup. How? Supposingly, P2P is a process. What is P2P? Anybody aware of P2P? Peer-to-peer, no sir. It is. I'm talking about business process. It is procurement to payment. From the time you procure the material to the time you finally pay to your vendor, it's an entire process. How? Supposingly, the material is required. The material requisition slip is issued by the the respective department, which says that I want this material at this rate. I have identified the vendor. That material requisition slip is approved by the procurement officer. Once that procurement officer approves it, it goes directly to the vendor. Order is placed. Vendor processes it. The material is received at your gate, factory gate. The receiver attaches or attests it, and inventory is upped by the inventory team. The order is placed. The same is supplied to the customer, and the payment for that goods is done to the vendor after the specified number of days. This is the entire P2P process. This has to be standardized to stop leakages in a company. Any scale of startup, when they want to reach a certain height, without process standardization, it's very difficult to do it. Otherwise, you will not be able to control what is happening in the business. If you don't establish the processes, there will be leakages which you will not be able to identify. आपके अकॉर्डिंग बिजनेस हो रहा है, लेकिन यार बिजनेस हो रहा है तो कंपनी में प्रॉफिट्स क्यों नहीं आ रहा है? प्रॉफिट इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लीकेजेस हो रहा है. योर प्रोसेसेस आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. So once the startup is incubated, it has started working and is ready for the next stage of growth, please advise them to standardize their processes. Have their internal audit done or process audit done so that these processes can be standardized. How many of you have heard of Z certification? ZED, Zebra, England, डिब्रूगढ़? नहीं. इट्स अ प्रोसेस एक्सीलेंस सर्टिफिकेट जहां पे आप अपने प्रोसेस एस्टैब्लिश करते हो. यू मिनिमाइज वेस्टेजेस एंड देयर आर सर्टेन लेवल्स, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, समथिंग लाइक दैट. एंड वो सर्टिफिकेशन के बेसिस पे देयर आर सर्टेन स्कीम्स जहां पे आपको कुछ बेनिफिट देते हैं. इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. कभी भी आपको टाइम मिले, जस्ट रीड अबाउट जेड सर्टिफिकेशन वंस. ओके? ZED. I was talking about a term called KPIs. What is KPIs? Oh, very smart, huh? Yeah. Why is it required? Exactly. But this is what is very important is just tracking your revenue is not going to help you.
the increase of revenue can be attributed to many things. आपने 100 रुपए कमाने के लिए अगर 80 रुपए खर्च कर दिए and आपका fixed cost per product is 30 rupees, you are making a loss by getting that revenue. Okay, so this is a kind of analysis that you have to do. You have to track your KPIs. It's very important to. How many of you heard of this term MIS? MIS, मैंने information कुछ कुछ data हर month देना होता है ना. KPIs is just like that. KPI is a part of MIS. Okay, unless and until you analyze your KPIs, you will be clueless, like you will not know the direction where you are going. When you analyze your KPIs, you will get to know exactly which is the area where you are lagging behind, which is the area where you are strong enough. These things are important so that you work upon your weaker areas and pitch your investor about your stronger areas. This will help you reach to a greater heights. Supposingly, for a retail store, what can be a KPI? Same store sales growth. कैसा कि एक रिटेल स्टोर है आदित्य बिरला, इंडिया लेवल पे उसके बहुत सारे स्टोर्स होंगे. रेवेन्यू तो यार मैं देखूं एवरी ईयर आज 100 crores है, नेक्स्ट ईयर इट इज 300 crores, अगेन नेक्स्ट ईयर इट इज 600 crores. आई एम हैप्पी सिटिंग एट होम, but I have to analyze that the increase in that revenue, whether I am getting it from the same stores or just because I have the investor money, I am adding more and more stores, and that is the reason why I am getting the additional sales. तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अ केपीआई कि आपके जो सेम स्टोर्स हैं, हाउ मच ऑफ दैट 300 or 200 crore का ग्रोथ is attributed to the existing stores and how much of it is from the new stores. Again, I'll take you one step ahead. In these retail stores, there are three basic categories. One is high street, one is mall, and one is market. जो फैंसी बाजार में खड़ा है अगर आपका स्टोर है तो वो मार्केट हो गया. हाई स्ट्रीट इज जीएस रोड में अगर आपका कोई शोरूम है, दैट इज हाई स्ट्रीट, एंड मॉल इज अगर आपका सिटी सेंटर में कोई एक स्टोर है. ठीक है, यू हैव टू ट्रैक द सेल्स एंड द ग्रोथ इन दीज थ्री कैटेगरीज ऑल्सो इफ यू आर इनटू रिटेल बिजनेस, ताकि आपको समझ में आए आपका ग्रोथ एक्चुअल में कहाँ आ रहा है, सो दैट वंस यू आर प्लानिंग टू इंक्रीज और planning and future expansion, so you will know which store is giving or which category is giving you the highest growth. Okay, then there is sales per square feet also that you have to analyze. Supposingly मैंने एक स्टोर खोला जो 1000 स्क्वायर फीट का है, उससे मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ, और एक और स्टोर खोला जो सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का है लेकिन उसमें मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ. आप समझ रहे हो द डिफरेंस? सो द ब्रांड्स एट टॉप लेवल वो एक लेवल और भी आगे जाते हैं, वो सिर्फ सेल्स पर स्क्वायर फीट नहीं निकालते. दे अब सपोजिंगली आई हैव अ स्टोर ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, दे हैव डिवाइडेड द स्टोर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. द मेल सेक्शन, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ एसकेयूज? एसकेयू कोड्स होते हैं ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, राइट? तो एसकेयूज इज बेसिकली द शर्ट विच यू आर वेयरिंग इज अ एसकेयू फॉर अ ब्रांड. ओके, उस सेम शर्ट का डिफरेंट साइज इज अ डिफरेंट एसकेयू, उस सेम शर्ट का डिफरेंट कलर इज अ डिफरेंट एसक्यू. करेक्ट? तो वाई एसक्यू इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब आपके पास 1 लाख 2000 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे प्रोडक्ट्स हो विदाउट एसक्यूज, यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज कि विच इज योर हाईएस्ट सेलिंग और हीरो प्रोडक्ट. सो यू हैव टू, इफ द प्रोडक्ट्स आर लार्ज, you will have to maintain the SKUs and analyze your sales by SKUs. Which is your hero product? Which is the category or SKU which is not giving you enough sales, but your money is getting stuck? Just get rid of it or do something to come into the higher bracket. You have to analyze your SKUs. Okay. Now I was talking about the brands. Okay, what they do is amongst the 1000 square feet also they have a dedicated area that out of this 1000 square feet, this 300 square feet is my female section. This 400 square feet is my male section. This 300 square feet remaining is my children section. ठीक है, वो उस लेवल पे एनालाइज करते हैं कि which segment is doing good in their particular store. क्यों करते हैं वो? Are they fools? Within this 1000 also they have divided this segment. आप किसी अगर अच्छे ब्रांड के शोरूम में जाओगे, आप देखोगे the section is divided. It is divided because they want to analyze कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, so that they can improve upon their performance. They can improve upon their numbers, they can improve upon their margins. The margins for different SKU is different. The demand for different SKU is different. Some SKUs जिसका डिमांड भी ज्यादा है, मार्जिन भी ज्यादा है, they can take you different heights. आपको वही aggressively सेल करना है अपना नंबर्स एनालाइज करने के लिए. समझ रहे हैं? Are you with me? Clear? तो KPIs are different
for different industry. They are different within the industry also. हर का business model अलग है. Identify your KPIs, what you want to track. ठीक है? For hospital, occupancy rate can be a KPI, right? Occupancy के अंदर भी category super deluxe, deluxe, general, suite rooms, those can be categories. उधर भी आप analyze कर सकते हो. Occupancy by category. Patient wise, you can analyze ki how much revenue you are generating from that suite per patient per night. Hotel में occupancy, hotel rooms, hotel business is seasonal. There is n number of KPIs which you can track on a monthly basis. Identify those KPIs, track it on monthly basis. Now this topic is personal finance. This is relevant to everyone. It is not just relevant to a startup founder. For us also, for you also, we want to plan our life in a way. It is possible these days. Earlier we did not have this much knowledge and the tools required, but now it is very much possible. What this personal finance basically is, it says that supposingly you are at 30 years of age in your life, okay? You want to retire at 60 years of age, but you want to continue the same lifestyle which you have now to retire a comfortable life. You want to know that number, that how much is required for me at the age of 60 so that I can retire comfortably, you know? So these tools, these calculations are very much possible today. You take down all the numbers. Every number is defined through timelines till 30 to 60, okay? There is 30 years. In this 30 years, you have to plan, the education of your children, the marriage expenses of your children, your personal ambitions, your car, your home, your abroad holidays. You can take into account everything. You can play with. How many of you are aware of the time, this concept of time value of money? You are aware of time value of money. So time value of money में क्या है? Timelines पे होता है सब कुछ. उसको डिस्काउंट करके फ्यूचर वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाते हैं. दिस इज एग्जैक्टली हाउ रिटायरमेंट प्लानिंग इज डन. So if you want to get it properly planned, you can have a retirement planning for sure. सारे expenses को you can take it into consideration. We'll take into consideration the inflation rate. Supposingly the school expenses today for your child maybe 10,000 rupees a month, okay? But this 10,000 rupees a month will not be same 10 years down the line, right? This is going to increase. So you have to take into account that 10,000 rupees will be inflated at, let's say, 8% per annum. So that will not be the same 8 years down the line. This will be different. So everything has to be perfectly done, airtight. Now you get a number, supposingly 2 crores at the age of 60, okay? You have done this calculation, you get this number of 2 crore at the 60. I'll show you a snippet of how it looks like this. Is it visible to all? No? Unfortunately, I don't have an option of, I think, zooming it. Okay, I'll just walk you. Is it visible? This is hypothetical number. I am not 48 years old, huh? Basically, what it says is, supposingly I am at 48 years of my age and I'll retire at 60. And my life expectancy, I believe, is 85. Looking at my size, I don't think so I'll live by 85, but then this is just an example, so I'll take a conservative approach. 85 years tak I live, so post-retirement, I have 25 years of my life. So to sustain this 25 lakhs, how much money do I need at the age of 60 to live a comfortable life? This calculation is based on that, and the number that comes at 60, जो भी है 2 करोड़ रुपया, how am I going to achieve that from day 48? आज हर महीना मुझे कितना इन्वेस्ट करना है ताकि I can achieve the retirement amount that I have at age 60. So this is the concept of retirement planning. ठीक है? Obviously this cannot be done
here because sabka expenses are different, everybody's aspiration is different, so it is very much customized. But what I'm trying to say is, please plan it so that you can live your life tension free. ठीक है, लेकिन देर आर सम सिनेरियोज जहां पे पहले टेंशन फ्री थे, ये करने के बाद टेंशन ज्यादा आ गया कितना पैसा कहां से लाएंगे मंथली. In which ways it's a call, but these things are easily available. So आप अपना personal ambitions को जो भी है, अगर obviously the amount which is required on a monthly basis, if it comes out to be very large and it's not possible to attain, we do it in a gradual manner. आज कम से start किया, then we increase it 10% year on year. There are various tools to achieve it. You know, those things can be worked upon. Any which ways. Acha, how many of you have health insurance here? बाकियों को क्या लगता है, मतलब कभी बीमारी नहीं होगी? लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा लोगों के पास है. सर, दिस इज प्रॉब्लमेटिक. इफ यू आर नॉट द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ ए फैमिली, अगर आप प्रॉपरली रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेते हैं, देन लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट. देखिए, लाइफ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट हेल्थ इंश्योरेंस इज द मोस्ट प्रायोरिटी वाला थिंग. मतलब आप ना, इफ यू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन that these hospitals have charged you for medical, you will just it will be. I read a report where the inflation that they were coming for medical and these operations were somewhere around 15 to 20% year on year. इतना तो नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ नहीं आता है अगर आप नॉर्मल बिजनेस करते हैं, तो इनका इन्फ्लेशन इतना ज्यादा आ रहा है. इट्स हाई टाइम दैट वी आर अवेयर, एंड if supposedly you have a good platform to educate your startup founders and incubators also, that health insurance is the most priority thing that you have to take up. There is problem is कि market में there are many people जो खाली कमीशन के चक्कर में they give you the wrong products. जब क्लेम लेने जाते हैं तो क्लेम मिलता नहीं है, आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया, वो डिस्क्लोज नहीं किया. देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड डिट्टो, DITTO, ठीक है. दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. They won't charge you anything for the insurance. They are spam free. Just schedule a call with them, ठीक है. It's a good platform. उनके साथ कॉल schedule करो. And the most important thing in health insurance is please disclose everything upfront. आज के टाइम पे health insurance में everything is available. Please disclose it upfront, ठीक है. And your family members, everybody has to be covered through health insurance. It is the most important thing, ठीक है. I would request कि आप आज जाने के बाद ही ले लो health insurance. तो it's very important because we have seen cases कि जहां पे हमने कुछ प्लान किया था, they were on the track to achieve it, but suddenly there was a medical emergency in the family, and जिसके लिए हमने जो प्लान किया था वो 3 साल पीछे हो गए, because that was an emergency fund. वो चाहिए था उनको, वहां यूज हो गया. They did not have health insurance. So not just for your own health but for your business also, or for your life in general, to avoid these hiccups, please have a health insurance, and please take it very seriously. Okay. Now come here, life insurance. Life insurance is also very important if you are the sole breadwinner of a family, or if you feel that the current net worth of you is not going to suffice, then health insurance should be taken. The limit you may decide. The premium is not much. Then there is no harm in taking it. What I feel is, so please have a life insurance also, but the health insurance should be priority. Okay. Sir, see, personally, I don't have a life insurance. मैंने नहीं लिया है, but I have a different reason for it. कि भाई, I am planning it in a way that, see, I am not the only breadwinner for my family. Okay, there are other income streams also. Any which ways, if I am not the breadwinner, then I was not planning to. But then I have built some assets in a way that that life insurance is not going to make a huge difference in my family's portfolio. So that is the reason why also I'm not taking any life insurance. And plus, in inflation wise, if you see, then I think a 1 crore term insurance, I'm not sure, sir, I may be wrong,
For a 1 crore life insurance, I guess the premium is only around 3,000 or 3,500. I don't know. ज़्यादा है? अच्छा, इतना ज़्यादा है? No, I don't think so. It's correct. I guess it's इतना नहीं है. Yeah, that I get. सर का तो बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को ऐसे. अच्छा, 20,000. हाँ, obviously, yes. Yes, true. And another thing, मैम, अच्छा वो आपने ये जो पॉइंट बोला मेरे को, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह लीजिए, डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट. सर, द मोर कॉम्प्लेक्स द प्रोडक्ट्स दे मेक यू, तो वहां पे रिटर्न कम हो जाता है. मतलब नो सर, इट इज अ मैम, इट इज नॉट वेस्टिंग मनी, इट इज अगेंस्ट योर लाइफ. Anyways, I differ on that thought process. For me, insurance is an expense. For me, insurance is an expense. It is not an investment. For health insurance also, मैं उसको सोच लेता हूँ वो मेरा खर्चा है हर महीना का. मैं उसमें ना कोई प्रीमियम का रिटर्न. मैम, this is not, this may not be true for your case. This is what I feel. What I'm saying is, even if I think of taking a life insurance, I will take it as a simple life insurance. I don't want the money back. I don't want the premium back. I'll just take it as simple one. And obviously, you may differ with that. Is anyone aware of these TDS rules? TDS, income tax TDS rules? Income tax TDS rules. You're aware? So when is this applicable? Supposingly you are incubating a startup. The founder says कि सर हमें TDS के rules को comply करना है क्या? Do we have to comply with the rules of this TDS? So what would be your answer? मतलब when will you say it is applicable, when it is not? So who has to comply with these TDS rules? That is only for salary, but there are various other sections under which TDS is applicable. Any idea? That is income tax. Normal income tax. So TDS, I'll tell you is, for every private limited company, they have to comply with the TDS rules. For proprietorship, if your turnover is exceeding 2 crores, you have to comply with the TDS rules. And if your partnership, if your turnover is above 40 lakh rupees, you have to comply with the TDS rules. In LLP, it is compulsory to comply with the TDS rules. TDS rules में क्या है? Basically, 2-3 clauses जो main है. If you are paying a professional and the amount exceeds 30,000 in a year, you have to deduct 10% of the tax and deposit to the government. The same way, the employer deducts your 10% salary or whatever TDS on your salary and deposits to the government. These rules are important because TDS non-compliance is again heavily penalized. Okay. Commission, if you are paying above 20,000 in a year, तो वहां पे भी आपको 5% काटना है. So there are various sections जहाँ पे TDS का compliance आपको करना है. Obviously, the founder will not go into details, and you also don't have to go into details. You just have to educate them कि if you are a private limited companies, आप please TDS का compliance कीजिए. If you are a partnership 40 lakhs के ऊपर, and if you are a LLP, you have to comply with the TDS rules. तो TDS का, because people don't know कि भाई TDS नाम का भी चीज exist करता है, and you have to comply with that. So TDS compliance is equally important. You have to educate your incubatees कि भाई you will have to comply with the TDS rules. So accordingly, obviously it has to be done through a professional. वो आपको comply करके चलना है. यहाँ पे भी है कुछ TDS के sections. इसको इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. It's not required at your level. For us it's there. But कब applicable है, कब नहीं applicable है, वो बस ध्यान रखिएगा किसको applicable है, किसको नहीं है. With this, I think it's enough for the day. Any questions that you have? कोई भी question, कोई भी कुछ भी बोलिए ना.
earlier I used to work in someone's direction. Now I make people work on my direction. Huh. So this is what I'm saying. Within the big four that I worked with, the work environment is the same. वहाँ पे heavy pressure है. So I was in Bangalore for 3 months just before COVID hit. So in these 3 months, I never saw what Bangalore actually looked like, because I used to work till 3 o'clock in the night, and the next day my partner calls me in the office at 10 o'clock. तो 3 बजे जाके सोता था, 10 बजे फिर ऑफिस चला जाता. क्या बैंगलोर देखूंगा? So the work environment is very hectic in the big fours. At least it was not sustainable for me, but the learning curve was extreme. Like इतना कुछ सिखा देते हैं आपको 3-4 साल में कि they prepare you for life. And मैंने जब वहां पे 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ की कंपनीज पे काम किया, तो मुझे यहाँ पे आके 100 करोड़ की कंपनी में भी काम करने में कभी दिक्कत नहीं आई, बिकॉज आई नो हाउ थिंग्स वर्क. फॉर अदर प्रोफेशनल्स, दे व्हाट द प्रॉब्लम दैट दे फेस इज, उन्होंने काम ही 2 करोड़ 3 करोड़ की स्टार्टअप्स या प्रोप्राइटर्स के साथ किया. तो जब उनको कोई 100 करोड़ की कंपनी ने अप्रोच किया, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम इन सर्विसिंग देम. मेरे के पास ये केस ही नहीं था. बट देन हैविंग सेड दैट, I in my personal opinion, the environment which I have created in my organization is, I want to be the kind of boss which I idealized when I was working there. जो मैं अपने एम्प्लॉयर से चाहता था कि मेरे बॉस ऐसे होने चाहिए थे, I try to be that. But sometimes given the deadlines and the nature of work we are into, sometimes तो work stretch होता है सर. तो maybe they also crave on those days जहाँ पे उनको मैं बैठा के 10 बजे तक काम कराता हूँ. तो ultimately, but I make sure कि those things are not happening on a regular basis. It is a one-off case. But over there, it was not a one-off case. One-off case थी आपको सैटरडे संडे मिल गया, वो one-off होता था कि छुट्टी मिल गया सैटरडे संडे को, वरना तो हमें उधर उस पर भी काम करना पड़ता था. तो the work environment is very toxic over there. But this is what I felt. This may be my personal opinion, but generally it is in big fours. वो काम वैसा ही है उनका. They have so much pressure in the environment. Ma'am, I have my practice, CA practice. Yes. My firm is in Fancy Bazaar. Sorry. Yes, I have my business card. I'll just circulate. It's Nishant Agarwal in company. Excuse me. Please circulate it. तो सर जवाब तो वही है कि वहां पे जैसे आइडियलाइज किया था कि बॉस ऐसे होने चाहिए, ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा ही बने. मतलब वन थिंग कोविड हैज टॉट अस इज ज्योग्राफी इज नॉट अ बाउंड्री. ठीक है, तो टुडे my team does not have to be physically present in my office to get the work done. We can work in an offline mode also. You can work from home. अभी लैपटॉप, I've given laptop to everybody. तो लैपटॉप है तो कॉल्स पे स्क्रीन शेयर करके काम हो जाता है. It does not necessarily have to be physically present. And the same case applies to our clients also. Supposingly everybody knows कि गुवाहाटी में ट्रैफिक कितना ज्यादा है, तो टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस 1 घंटा मिनिमम जाता है. 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना. It's like 2 hours of our life. तो वी ट्राई कि जहाँ पे मीटिंग्स करना है एंड ऑल दोस करना है वो हम वर्चुअली कर ले ऑन अ वीडियो कॉल, एंड इफ इट्स नेसेसरली रिक्वायर्ड वी ट्रैवल. एंड वी मतलब वैसा ही है सर, मेंटेन करके चलते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इतना रिजिड नहीं है. तो आई थिंक दे आर हैप्पी. बाकी तो आप डायरेक्ट बात करेंगे तो ही पता चलेगा. नो, इट्स अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट. एज आई सेड, ज्योग्राफी इज नॉट अ बाउंड्री दिस डेज. तो कोविड हैज गिवन, of all the negative thing COVID has given us, only one thing positive is they have taught us to work across geographies on a virtual mode. So अब we are able to serve entire clients from Guwahati. Everything is on cloud these days, so that is not a problem. Cloud पे सब कुछ manage हो जाता है. I deal with everything, ma'am, from companies to proprietorship to manufacturing. Sir, ESG principles, sir. See, carbon footprint today is targeted at high level manufacturing companies because they have from generations discharged the highest waste, be it into the air, be it in the water body. Okay. Now when it comes to ESG applicable on startups, if you are into an environment or an industry which is waste heavy,
maybe it may be releasing the chemicals into the airs or into the water stream, then it is very much heavily applicable on you, even if nobody is looking at right now. But if the focus is on you, then you have to comply with it. Other than that, the compliance issue of ESG on startups is not that heavy as on today as we speak. But it is going to be, sir, in the near future, because carbon footprint and credit is a framework which is developed but not yet fully implemented on countries. Some countries have implemented it. India also, some bigger companies have implemented it. But at a startup level, this thing hasn't reached, sir. Yes, sir, true. Sir, but that for that, there has to be proper regulations and the government have to be very strict on that. If that is not there, then nobody is going to comply. आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि अभी नॉर्मल बिजनेस में कंप्लायंस इज सो मच दैट जो चीज थिंग्स विच आर नॉट कंपलसरी, पीपल डोंट फोकस ऑन दैट. दे से कि जो पहले कंपलसरी है उसको देखेंगे, जो कंपलसरी नहीं है उसको बाद में देखेंगे. तो इफ यू मेक द ESG compliance and carbon footprint compulsory, then people will be serious for that. Otherwise, they take it lightly. Yes, sir, it is very much important. It is very much important. मतलब सर आपका क्वेश्चन ही मैंने समझा. आपका फ्रेंड कोई पर्सनल मतलब वो पोर्टफोलियो बनाया उसने, इन्वेस्ट करता है. ओके ओके, समझ गया सर. तो सर टॉप 30 में लिस्टिंग्स इज, आई डोंट नो कि वो लिस्टिंग किस बेसिस पे आया, बट इफ इट इज टॉप 30 बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो सेंसेक्स है हमारा, वो टॉप 30 स्टॉक्स का है एंड निफ्टी इज टॉप 50 स्टॉक्स. अगर इफ इट इज अ पार्ट ऑफ सेंसेक्स, सर हो सकता है आपने नाम नहीं पढ़ा हो, बट दो 30 स्टॉक्स आर वेरी मच फेमस इन एंटायर इंडिया. अगर वो उसके अलावा कोई रैंडम पोर्टफोलियो, देखिए आप किस प्लेटफॉर्म का बात कर रहे हैं मेरे को ये भी नहीं पता, बट हर प्लेटफॉर्म में कुछ कुछ रिकमेंडेड स्टॉक्स आते हैं, कुछ फेमस होते हैं, कुछ फेमस नहीं होते हैं. It is not necessary कि those companies are very big. It may be a small cap also. तो I cannot very much comment कि वो क्यों फेमस नहीं है, बट अगर वो सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स है तो सर वो फेमस है, उतना आई कैन से. अगर वो कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो एंड बाय रिकमेंडेड है उसमें, तो मैं तो इतने सजेस्ट कर सकता हूँ कि बिफोर पुटिंग इन योर मनी आपको अपना डीप रिसर्च करना चाहिए. एंड इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द मार्केट, प्लीज डोंट इन्वेस्ट डायरेक्टली ऑन सच कंपनीज. आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करा सकते हैं. अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप मार्केट को जानते हैं, तब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स लीजिए. दिस इज व्हाट आई कैन रिकमेंड. उसके अलावा तो मैं सर क्या ही रिकमेंड कर सकता हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. यू आर एन अमेजिंग ऑडियंस. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir, for your valuable session. Now I request all the participants for a group photograph with Nishant, sir. Venue is here itself. And after that, we quickly proceed for lunch because our second resource person has already arrived. So let's start the group photograph.